Good morning, Simran and Rajvanshi. Okay. Uh, Yesterday we stopped talking, having discussed it till PIL, I think. PLI. Okay, so what we'll do today, we'll try understanding what is PLI, then take it from there. So, to begin with, when we talk about production linked, I'll give you a write up, but I need you to understand this first. Production linked incentive scheme, it works like this. See, so production linked incentive scheme, the basic idea is that government will choose an industry. So say government chooses an industry, electronics, and within this industry government will choose the firm. All right, government chooses an industry, and within the industry government will choose a firm. Say government chooses a firm, Samsung. So government chooses an industry, and then within the industry government chooses a firm. Now government will set a sales target for the firm. Alright, so for Samsung, Government of India sets a sales target, that this much is the sales target for the firm. Say, take an example, government tells Samsung that in the next 5 years we want you to sell commodity worth 15,600 crore, which should be made in India. Alright, next 5 years we want you to sell commodity worth 15,600 crore, which should be made in India. Okay, if they are able to achieve the target, alright, if Samsung is able to achieve the target, then government tells them that if target achieved, then Samsung will receive 4% of targeted amount as production linked incentive. All right. So in that sense, 624 crore rupees, Government of India, this is 4% of this amount, Government of India will give Samsung as the production linked incentive. Do I believe you get the point? So the basic idea is encourage the firms to come and invest from India. Alright, or invest in India, then produce from India, make India an important part of the global value chain. That is the basic idea behind this scheme. Alright. Now, the scheme was initiated in 2021 under the Atmanirbhar Bharat program, and it has been extended to 14 industries as yet in India. So I'm giving you the write-up, but you understand the scheme, right? Okay. So you take the write-up and we'll do an analysis on the advantages, disadvantages, and all those stories. So you write within that, government announced PLI, government announced PLI in 2020-21. I'm talking about the financial year 2020-21. That was during the COVID pandemic that they announced it. So 2020-21, under Atmanirbhar Bharat announcements, under Atmanirbhar Bharat announcements, full stop. The scheme was initially introduced. The scheme was initially introduced in three sector industries, that is textile, automobile, and electronics. Full stop. In the same year, it was extended
it was extended to 10 industries. I repeat, in the same year, it was extended to 10 industries, full stop. In 2021-22, in 2021-22, the scheme was extended. The scheme was extended to 13 industries, 13 industries with a budget of rupees 1.97 lakh crore, 1.97 lakh crore for next 5 years. After a full stop, you write, in 2022, government added 2022, government added 14th industry. In a bracket you write drone industry, DRONE, drone industry. Close the bracket. With a separate budget, of rupees 361 crore under PLI. Full stop. Change the paragraph. In PLI, government chooses the firms among identified industries and sets a sales target for the firms for the next 5 years. For the next 5 years. Full stop. If the firm is able to achieve targeted sales, then government provides 4% to 6% of targeted value, 4% to 6% of targeted value as PLI to the firms. I hope you understand the basic idea. So we developed PLI with the basic idea that okay, 14 industries chosen. Now see, if the budget is around 2 lakh crore, which we just wrote, now the government is planning to give anything between 4% to 6% of the targeted sales, which means that if the budget is 2 lakh crore, government is expecting production of around 40 lakh crore under PLI, then only the average 5% is around 2 lakh crore, so 40 lakh crore unindustrialization through PLI. Alright, that is the basic idea of production linked incentive scheme to give an impetus to manufacturing in India. Alright, that is the basic idea, that give an impetus that okay, if manufacturing is not picking up and people are not investing in India, then how can you incentivize them to set up shop in India and start
manufacturing. So what are the advantages that we see, disadvantages that we see? We go into that. So you write benefits, no criteria, it's discretion of the government. Government decides based on their discretion that what kind of firms will be selected. All right. Okay. Then you write in the benefits part, 1, it can establish India, as an important part of global supply chain or global value chain network. Global supply chain or global value chain network. All right, that is one thing that it can. Now let's understand what I imply by that. So suppose there is a manufacturing company. This manufacturing company can buy its raw material from these companies. And these companies can buy their raw material from these other companies. Then they use these raw material, produce the finished product. Say this is the raw material they buy. They use the raw material, produce the finished product, then they store the product. After that, they send the product for grading and packaging. Grading means getting an ISI mark, ISO certificate, or AG mark. That is called grading, certifying that it's a good quality product. So they send it for grading and packaging. And then these people will be selling it to wholesalers. I can believe we understand wholesalers. Those who buy in bulk to then transfer it to the market. So they'll sell it to the wholesalers, and the wholesalers of course will be connected to retailers, and these retailers in turn then will take the product to the consumers. They will be all over the system and they can take the product to the consumers. When you see this happening, I just developed a very small and simplified thing. Then of course, as I said, they take it to the consumers all over. So when you see this happening, what I just drew on the board, the left side part, this part, for this manufacturing company is what we call backward linkages. Alright, the left side part for this company is what we call backward linkages. Alright, so that is a backward linkage. Alright, and the right side part, this part, starting from storage, etc., is called forward linkage. Alright, अलग अलग नाम बोले जाते हैं, backward linkage, forward linkage, downstream, upstream, downstream. You understand that? So the word means the same. Upstream means raw material chain, downstream means the finished goods, how you supply them, and so on. Now, when we combine all of this together, this is what you call a supply chain or a value chain. Alright, this is what we call a supply chain or a value chain. Alright, so whenever we talk about a supply chain, this is the idea of it. Now think, this raw material supplier can be in Singapore, this person can be in Britain, this person can be in Thailand, this person can be in Indonesia. You understand that? And then this company can be in India, this company can be in China. So that's a global supply chain.
that you create. That globally you can outsource your inputs from everywhere. You produce an output somewhere, you produce it, then you sell it all over the world. You clear on that? Okay, understand one more thing. At each level, raw material, supplier, and then manufacturer and so on, even wholesaler, retailer, at each level you will need storage cost. Whatever everybody produces, they need to store. And at each level you need transportation cost, isn't it? So think, there is a cost of transportation, there is a cost of storage, there is a cost of grading and packaging. That is, whosoever will give you an ISI mark or an AG mark will take fee for that packaging part and all. And there is a cost of ensuring your commodity while it is transported from one place to another or while it is under storage. You understand that? So when you take the cost of transportation, cost of storage, cost of grading packaging and cost of insurance, that is what you call logistical cost. Alright, this is the logistics that you talk about कि आपको चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है, स्टोर करना है, ग्रेड कराना है, पैकेज करवाना है, साथ में इंश्योरेंस ध्यान में रखना है कि वो अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई तो इंश्योरेंस मिल जाए. इन सभी चीजों पे जो आप खर्च करते हैं उसे ही कहा जाता है लॉजिस्टिकल कॉस्ट. ऑलराइट, सो if you have better transportation, if you are connected well to the world, if you have better storage, then your logistical costs are reduced, your ease of doing business is more people from global supply chain might be willing to participate. So what India is thinking then is that if we can do this PLI and certain international companies can come, say for example in electronics, Apple has come to India and Apple is producing from India now big time. So when Apple came to India, initially there was a criticism that they are only assembling in India. Even now some people are outdated, they still criticize. I'll tell you why I say outdated. I will give you recent data. So when Apple came to India, initially they were only assembling in India majorly and selling from India. Even if you ask me, I don't mind assembling. If any value is created in India, I am happy with it, as long as that value is higher than the PLI subsidy I am giving. You understand that if I am giving subsidy of 4% and somebody is doing value addition worth 10% in my country, I am still becoming better off, because even assembling will mean some people will be employed, some land will be used, some labor will be getting some job and so on. I mean, it's not that assembling is nothing. I mean, sometimes I read it in newspapers, it means assembly तो कुछ है ही नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. But अगर assembling भी हो रही है तो कुछ काम तो हो रहा है और उससे नौकरी क्रिएट हो रही है, लोग लैंड यूज कर रहे हैं, कैपिटल यूज कर रहे हैं. बट खैर चलो, एक ये बात है. बट व्हेन एप्पल स्टेड इन इंडिया फॉर अ ईयर, दे फेथम्ड इंडियन मार्केट, दे स्टार्टेड मेकिंग गेन्स फ्रॉम इंडिया, देन दे asked their input suppliers to come to India. So Pegatron, it's one of the biggest supplier of inputs to Apple, chips and all. They came and set up shop in India. Then Winstrom came to India. Winstrom shared its inputs with Tata, a company, and now Tata and Winstrom together are establishing a fab manufacturing unit in Moraingaon, Assam. So what I'm trying to teach you is, initially the firms can come and assemble. One has to keep some patience, and gradually that assembly will improve and we'll start shifting to other sides. And then, the next part starts happening where the input suppliers start coming in. And then the technology diffusion starts happening. It doesn't happen in a day, it doesn't happen in a month. It will happen at least over 2-3 years. And of course, it will need more than just PLI. But this is what PLI is aiming to do. So what happens then? When you say we want India to be a part of global value chain. So if India is importing X amount of commodity from others, we are trying to make sure that India also manufactures components, commodities, where that is also imported by others from India, which makes India an important part of global value chain. So if people can't refuse to sell to India, because they will know that even India has important things to sell to them. Do I believe you understand that? So that is the basic idea of being a part of global value chain, which PLI can sustainably do. Again, I'm saying can do, I'm not saying will do. It's not necessary, there are conditions attached, but it can do. Alright, that is one thing to keep in mind. And I again repeat, economic policies are not like ENO that you will drink it and you will release gas in 6 seconds. Economic policies take time. When you initiate them, it takes a couple of years, 3 years, 4 years to actually start giving you big results and enhancing things. Alright.
द naysayers will be naysayers. मैंने कल भी हिंदू में एक आर्टिकल पढ़ा, आप लोग भी पढ़े होंगे, और मैं इसलिए जानबूझ के वो मेंशन कर रहा हूं. वो आर्टिकल कह रहा था इवेजन हो रहा है जीएसटी में, यहां से इवेजन है, वहां से इवेजन है, ठीक है. तब दो बातें हैं. तब तो इतने इवेजन के बाद भी अक्टूबर में 1,87,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट हुआ. So all talk about urban consumption slowdown is nonsense, and GDP is growing pretty well. But the same newspaper writes that there is an urban consumption slowdown and GDP is not going to rise very well. And then they say that there is a lot of leakage in GST. And then they report that we had 1,87,000 crore rupees collection of GST, which is the second highest ever collected by India. They are themselves contradicting themselves. And I don't mind it. That's completely okay. They are a left of center newspaper. They are getting rattled. They have a prime minister for 15 years now whom they don't like. It becomes difficult to stay. I can fully appreciate it. I've seen many such people in my life. And it can be anybody. It's like somebody doesn't like the Congress party, and then tomorrow Congress party comes to power. They will be rattled. They won't be liking it. But that doesn't mean that I start contradicting myself and make a fool of myself, which of late Hindu has been doing. क्या आप सोच के देखिए, अगर 1,87,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट हो रहा है, जबकि अखबार के हिसाब से बहुत सारा इवेजन हो रहा है जीएसटी में, इसका मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन तो और ज्यादा है. इसका मतलब कोई अर्बन कंजम्पशन स्लो डाउन नहीं है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कैसे कलेक्ट होगा नहीं तो. और इसका मतलब जीडीपी ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब जीडीपी ग्रोथ हाई रिपोर्ट होता है तो उसी अखबार में लिखते हैं नहीं कंजम्पशन का स्लो डाउन हो रहा है, ये जीडीपी ग्रोथ सस्टेन नहीं करेगा, थोड़े चिंता की बात है. वही अखबार लिखते हैं कि जीएसटी का कलेक्शन 1,87,000 करोड़ सेकंड हाईएस्ट है, फिर कहते हैं इवेजन भी हो रहा है. तो जब आप पढ़ें अखबार को तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए. पहली बात, अब कहेंगे सर तो फिर इवेजन हो रहा है या नहीं? डेफिनेटली हम इंडिया में हैं, तो इवेजन तो होगा ही. आई मीन सेइंग दैट टैक्स इवेजन वोंट हैपन इन इंडिया, no question. Tax evasion is happening. I am only claiming that tax evasion is not such a serious issue that we should be majorly bothered about it right now. I can take it as a serious issue if my average revenue collected from GST starts falling. कैसे पता चलेगा ये? GDP calculation will tell you how much output has been produced, and GST collection will tell you out of that output produced how much has been collected as GST. So if GST as a percentage of GDP starts falling, then to some extent we can start making a guess that there is some major evasion happening. Do I believe you understand my analysis? But if GST as a percentage of GDP is rising or at least constant, then there is no reason to get worried about some major evasion, because a major evasion should mean production is happening, sales is happening, reporting is not happening. You understand that? For tax collection purpose. But that reporting for production purpose will happen, because when we calculate GDP, we don't calculate it only by expenditure method, we also calculate it by value added method, where we calculate it at the factory point. And how much did the factory produce? And then compare it to how much was the GST collected. You easily get a result. So be careful. Again, I repeat, we are a politicized system, and no doubt, but we are a heavily टिल्टेड सिस्टम टुडे. तो जो लोग पसंद करते हैं सरकार को, वो बहुत पसंद करते हैं. उस केस में जो सरकार गलत भी कर रहे हैं उसको भी सही ठहराते रहेंगे. तो एक वो चैलेंज है. जो लोग नापसंद करते हैं वो बहुत नापसंद करते हैं. तो जो अच्छे न्यूज भी इंडिया के लिए आ रहे हैं उसको भी कुछ उसके अंदर भी कुछ ब्लैक पेंट डाल देंगे कि नहीं कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है. So be very careful about that when you are reading. And again, don't think about changing newspapers. The newspapers will give you one side of the view, which is the editorial view. You should be educated enough to start judging that, okay, I read these kind of articles last time and this is coming now. Are these articles contradicting each other? And if they're contradicting each other, that means that there is some issue with the things I am reading. Also remember, I can prove anything to be bad by comparing it to the ideal world. तुम 10 घंटे पढ़कर आओ मेरे पास, फिर भी मैं बोलूंगा 2-4 घंटे तो हो सकते थे और. सो आई कैन ऑलवेज मेक यू फील लो बाय कंपेयरिंग यू टू द आइडियल वर्ल्ड. कभी कभी आप भी वो गलती करते हैं. यू कंपेयर योरसेल्फ टू द आइडियल वर्ल्ड और बोलते हो पढ़ाई कम हो रही है मेरी. नहीं, अगर तुम एक दिन में 10-12 घंटे पुट इन कर रहे हो तो अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, इंक्लूडिंग द क्लासरूम. अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, डिपेंडिंग उस 12 घंटे में पढ़ ही रहे हो. किताब खुली हुई है वो नहीं कह रहा हूं,
बैठे हो तो पढ़ ही रहे हो. So if you're studying all those hours, you're putting a good work. Give yourself a pat at the back rather than think, oh, why am I not making it 15? Well, of course, you should love to make it 15, but you can't make it 15 every day for 7 days in a week. So maybe if you can make it 15 hours for a couple of days, and you can make it 10 hours for 2-3 days, and you don't study at all for the next 2 days, still you have studied something like 60 hours in the week. Is quite a good achievement because it makes it 10 hours a day with 1 day off. So you should be happy with that achievement. And believe me, I've been doing this coaching for very long. अगर आप 8-9 घंटे का एवरेज बना लेते हैं फॉर 1 ईयर कंसिस्टेंटली, तो फिर आप पक्का क्वालिफाई करने के अच्छे हालत में. दिक्कत होती है वो जो आखिरी वर्ड मैंने कहा, कंसिस्टेंटली. जब हम 4-5 दिन कुछ नहीं पढ़ते और तब 3 दिन 10 घंटे भी पढ़ते हैं, तो एवरेज जो है वो 4 घंटे का ही आता है. बट 3 दिन 10 घंटे पढ़ के हमें लगता है शानदार पढ़ लिया मैंने, अब 1 दिन का ब्रेक ले सकता हूं. हम भूल जाते हैं कि पीछे 5 दिन दिवाली दशहरा सब मना रहे थे. तो वो मोटिवेशन अगर बना लो तो देयर इज नो प्रॉब्लम. तो वही मैं आपसे, इकोनॉमी पर भी ट्रू होता है. एन इकोनॉमी विल नेवर हैव एवरीथिंग गोइंग गुड, एंड एन इकोनॉमी विल नेवर हैव एवरीथिंग गोइंग बैड. सो एन इकोनॉमी विल ऑलवेज बी अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड. इफ द गुड्स आर डोमिनेटिंग द बैड्स कंसिस्टेंटली, it's a good result you are having. If the bads are dominating the goods consistently, it's a bad result you are having. You should be careful. Do I believe we understand the technique then? Okay. Then you write the second benefit of PLI. You write, industries like textile, comma, electronic goods, comma, pharmaceutical ingredients, Pharmaceutical ingredients means the raw material used in making pharmaceutical. Okay, that is pharmaceutical ingredients. So pharmaceutical ingredients, comma, white goods. White goods are, please be careful, white goods are electrical durable appliances without a computer chip in it. So a normal television, a normal washing machine, a normal refrigerator, they're all white goods. Alright, but a smart TV or a smart washing machine, they become brown goods because they have a microchip in it. Alright, computers, laptop, mobile phone, they are all brown goods. Alright, whatever has a microchip in it, brown good. Whatever will not have a microchip in it, white good. Alright. Okay. So you write within it, white goods, etc. are labor intensive in nature, and therefore they can be useful in generating employment in the economy. Then you write next, most of the industries like automobile, comma, electronics, etc. source their raw material and components from MSME. MSME is micro, small, medium enterprises. From MSME, and therefore it leads to increase in
growth, increase in growth of MSME in India. It leads to increase in growth of MSME in India. All right, that's another thing, that MSME gets supported through these mechanisms. Then you write one more. It can lead to increase in exports from India, as observed in electronics sector, where exports of mobile phone by Apple have more than doubled between 2022 and 24. Have more than doubled between 2022 and 24. Then you write one more. It can generate tax revenue for the government. It can generate tax revenue for the government through GST, and corporate income tax. I'll tell you what I imply by that. Imagine if India produces, or people produce 40 lakh crore rupees worth of goods in India, and even if they pay 10% as GST average on these goods, that will mean 4 lakh crore rupees of GST collected by the government, double of the budget for this amount. So again, one criticism is, why are we spending so much money on it? Well, we are spending so much money on it, and when production happens, we'll collect the money back in terms of just the taxes that people will pay. Add to that also the income tax, corporate income tax, of course, that is the profits that people will make in India and pay a tax of 30% on that. So the scheme can self-finance itself. It is not that you have to look for it for a separate financing. The scheme can self-finance itself. All right. Also, sometimes it is said that, why are we spending so much of our energy on manufacturing? Just recall what I told you yesterday. It is imperative that we do manufacturing in order to bridge the gap between rural and urban, and it is imperative that we do manufacturing to create good quality employment in the country. You understand that unless we don't do manufacturing, both these things will go missing. All right. So we need to focus on ideally, if you ask me, we should have done this 2 decades ago. But then we didn't do it 2 decades ago. So now we are doing it, and it's still not too late. Why do I say still not too late? Because the world will never stop consuming manufacturing. So we just have to make sure that we produce it at a cheaper rate for the world. If you recall, long back I told you, make in India and make for India. All right, I'll just recall it for you quickly. India has 30 crore to 40 crore people who are earning in the zone of, and this is 30 crore to 40 crore total people, so workforce will be around 10 odd crore. All right, but 40 odd crore people who are earning in the zone of 3,000 to 4,000 rupees per capita. It's like husband and wife both working and maybe earning on an average 6,000, 5,000 rupees each per month. So the family earns 12,000, 14,000 rupees per month. So if the family is of 5 people, the per capita income becomes 3,000, 4,000 rupees per month. I hope the calculation is understood by all. Okay, think now. Who are these people? They are people who are landless agricultural labor. They are people who are rickshaw pullers. They are people who are unorganized sector workers, construction labor and all. They are people who are house helpers.
These are all people who are earning this something like 6,000, 7,000, 8,000 per month, and husband and wife both working. So the family income reaches 15, 16,000 rupees per month. And say the family has 5, 6 people. So the average income of the family is, there is husband, wife, and their 2, 3, 4 children. And the average income of the family becomes something like 3,000 to 4,000 per month. If we can start investing in textile, leather goods, shoes, toys, furniture, and so on, small electrical appliances, food processing, then do these sectors need high investment, or will they be okay with even medium scale investment? Medium scale investment. Do these sectors need only very high urbanized areas for production, or will they be okay even with semi-rural, semi-urban areas? Semi-rural, semi-urban areas. Will these sectors need only very skilled workforce, or will they be okay with even semi-skilled and less skilled workers, along with the very skilled workers of course too? So you know what I'm trying to drive home. ये जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स मैंने कहा, जो आज के डेट में रिक्शा चला रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं या हाउस हेल्प का काम कर रहे हैं, अगर हम इन इंडस्ट्रीज पे काम करेंगे तो हम इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे दूसरी जगहों पे. So when these people start getting those job opportunities at various places, their income levels will rise from 6-7,000 per month per person to 15-16,000 per month per person, because that is the industrial labor wage in India. So the family income rises from something like 12-14,000 rupees per month to something like 25-30,000 rupees per month. And that means the per capita income of the family rises from something like 3-4,000 rupees per month to 7-8,000 rupees per month. You understand the story till here? What will the family demand now? The family will demand clothes, the family will demand shoes, family will demand processed food, family will demand maybe toys for the children, and so on. And what are we making the people produce? Same things. So make in India and make for India. You know, there are 40 crore such people, I repeat. Now if you get 40 crore people demanding such commodities and you are producing for 40 crore people all over India, then that is what will give us what is called economies of scale, the advantage of large scale production. And once we get that economies of scale, then that is what will allow us to be one of the most productive around, and that will then allow us to even export to the world. So my consumption picks up, my investment picks up, employment becomes better quality. People are not landless labor anymore. They are industrial factory workers. People are not rickshaw pullers in an unorganized sector anymore. They get an organized work. And the richer class of India can be the investor. And how do we do that? By making it easier to do business in India, by improving upon laws in India. And all that will imply that growth is happening now, but that growth will be bottoms up rather than top down. When the growth is via software sector, steel, satellite, banking, finance, then the growth is urban among very skilled people, and that's top down. But when the growth is via textile, shoes, furniture, toys, food processing, then the growth is bottoms up, and that will give high growth to India with larger amount of people included, and that is what can be the method of inclusive growth with high impetus. Do I believe you understand the story? So this is something that manufacturing can do in India, which we should be practicing now. I just shared with you a presentation I gave the Ministry of Finance 8 years ago. They clapped a lot. They gave me a good shield also, but they didn't implement it. That is the problem part. So unless you don't work on these theories, but you got to make sure that you work cohesive. Plus, only central government cannot do everything, because labor law, state government's domain, land, state government domain, agriculture and labor is stuck in that, state government domain, education, healthcare, state government domain. So you need to make sure state governments become more functional in India by decentralizing power and making them responsible for what they are doing. So that is what we miss in India. हम हर बात में मोदी जी को ले आते हैं. अगर अच्छा भी करेंगे तो मोदी जी करेंगे, कुछ खराब भी हो रहा है तो मोदी जी ही कर रहे हैं. हमें खबर ही नहीं कि मोदी जी केंद्र सरकार चला रहे हैं और असली काम इंडिया में राज्य सरकार करती है. Because all the important things that are attached to standard of living is connected to the state government. तो जब तक केंद्र सरकार आपको एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी दे सकती है, बट उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, कॉलेजेस को क्लियरेंस देनी है या नहीं, स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग कैसे देना है, स्कूल की भर्ती कैसे करवानी है, सो दैट यू डोंट टेक ब्राइब व्हाइल टेकिंग स्कूल टीचर्स, इट्स ऑल अबाउट स्टेट गवर्नमेंट्स डोमेन.
We hardly talk state government in India. You know, you'll hardly see a discussion on how the state government has been performing. There's a lot of talk about how the central government does. अजीब अजीब बातें करते हैं हम. Education budget is not being increased by the central government. Well, check it with the state governments. Education is not central government's domain. It's a state subject. So state should be focusing on education. State should be focusing on health. You know, but हम लोग, खैर हम ही लोग हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन भी इसीलिए आप देखिएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, उसमें भाषण दे रहे होते हैं, मैं आपके यहाँ नल लगवा दूंगा, बिजली ले आऊंगा, तो वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर का काम है. और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं तो वो लोग अपना हाथ फोल्ड के कह रहे होते हैं हमें वोट दीजिए, हमने बालाकोट किया था. वो पार्लियामेंट का काम था. So हम लोग सब कंफ्यूज लोग हैं, हम सब कुछ में सब चलता है. We are that. But just on a serious note, we have to be careful that industries are a must in India. So if somebody says, well, we can do without industries, well, how about all those 20 crore people who are in agriculture? How do we plan to upgrade them without having an industrial development? Plus, why should India leave industrialization when we have such a huge scope? India is not only Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, Chennai. India is far more deeper than that. So India has too many people who would love to work at 10,000 rupees per month. Because at the moment they are not even getting 5. You know, वो हम लोग सोचते हैं नहीं 15,000 से कम की क्या ही नौकरी होगी. गरीब आदमी को भी 15,000 तो मिलना चाहिए. फिर हमने गरीब देखे ही नहीं अपने देश के, कि जो 4,000 की भी नौकरी कर रहे हैं, 3,000 की भी नौकरी कर रहे हैं. लेकिन हम लोग हैं एसी रूम में बैठ के प्लान बनाने वाले लोग. तो हमें लगता नहीं 15 से कम क्या है ना, लेट्स पुट 15. तो जैसे ही हमने कहा वेज रेट 15,000, अब एम्प्लॉयर जो होंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उनके लिए क्या ऑप्शन आया, दैट रादर देन पेइंग अ वेज रेट ऑफ 15,000 ईदर बाय मशीन और hire the worker through the unorganized sector mechanism where you are not liable towards any law. हमने प्लान करके अपने मैन्युफैक्चरिंग को तबाह किया है. एक मैंने आपको वेज का एग्जांपल दिया, अब दूसरा एग्जांपल लीजिए. वी गिव इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया. सो हु आर द पीपल हु गेट सब्सिडी? Farmers is one. Okay. Not all these farmers are very poor, but we give subsidy to all the farmers. गरीब किसान है हमारे यहाँ ना, बहुत सारे बेचारे BMW में घूमते हैं सिर्फ. बिहार यूपी में आप जाएंगे तो स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, फॉर्चुनर है, गरीब लोग हैं बेचारे. उनको तो सब्सिडी मिलनी ही चाहिए, कैसी बात करते हैं. तो एक उनको सब्सिडी दे रहे हैं. सेकेंड सब्सिडी इज टू पुअर पीपल लाइक मी. इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी जो दिल्ली में रहे, अगर दिल्ली में मेरा घर है और अगर मैं 400 यूनिट से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता हूं तो मुझे सब्सिडी मिल जाएगी. गरीब आदमी हूं, मिलनी चाहिए. और इस सब्सिडी का जनरेशन कहां से होता है? हाउ डू वी कंपनसेट? बाय चार्जिंग एक्स्ट्रा फॉर कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? एंड हु आर द कमर्शियल यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मोस्ट ऑफ माई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. Electricity is a universal input for them. So we tell them we'll make your input costly because we want to subsidize poor people like Vibhas. That's anti-industry. इंडस्ट्री के खिलाफ जाने का ये बेसिक एग्जाम्पल्स हैं कि हम इंडस्ट्री चाहते ही नहीं अपने देश में. हम अजीब लोग हैं. हम हरकतें ऐसी कर रहे हैं कि इंडस्ट्री ना हो हमारे यहाँ. और अभी मैं आपको बहुत सारी ऐसी हरकतें बताऊंगा. Give me another 10 minutes. But this is the challenge of pursuing manufacturing in India. So we need to be careful that we will have to be industry friendly, we'll have to be investors friendly, we will have to make rules which are better, and then industries can always grow in India because there is a large number of people in India who are at the moment underemployed or unemployed who can get employed if industrialization happens. Services sector won't be able to employ everyone, especially it won't be able to make people jump from agriculture to services straight away. So keep that in mind. Now I take you into some of the challenges that PLI brings. So you write, okay, give me an example of a capital-led industry. Okay. 20 years later, 2044, two big countries standing against each other, one called India, one called China. India is importing all its semiconductors from Taiwan, from USA, from China.
And now with these two countries facing each other, China blockades the South China Sea and Mediterranean is blockaded by another Chinese ally like Russia or Iran, and India is unable to import semiconductor. What does India do? No, just tell me what does India do now? ये typical आदत है criticism की, जहां जवाब नहीं है वहां से भागो कुछ और पकड़ो, फिर पहले इसका जवाब दो ना, क्या करें इस हालत में, क्या करें, क्या जवाब है इसका? मतलब बिना इंडस्ट्री बनाए आरएनडी आएगा इंडिया किसी देश में? किस इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है जहां इंडस्ट्री के प्रेजेंस के बिना आरएनडी आ गई हो? पहले एक एग्जांपल देके बताओ मुझे। मैंने तो अपने 27 साल के इकोनॉमिक्स में ये नहीं देखा कहीं। मतलब तुम कहना चाहते हो कि ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री ना हो एक देश में, लेकिन सडनली ऑटोमोबाइल के रिसर्चर्स उसी देश में पहुंच जाएंगे कि हाँ यही तो वो देश है। रात को सिंड्रेला आके मुझे बता के गई कि आज से 10 साल बाद इस देश में ऑटोमोबाइल आएगा, तुम आज से आरएनडी करो। पहले घोड़ा आता है, फिर पीछे ठेला लगाते हैं। घोड़े के आगे ठेला लगाओगे तो ठेला आगे नहीं बढ़ेगा। डोंट पुट द कार्ट इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स, पुट द हॉर्स इन फ्रंट ऑफ द कार्ट। समझ रहे हो मेरी बात? ये सारे आर्ग्यूमेंट्स द हिंदू के हैं और मैं इसीलिए एक एक करके उनको डिस्ट्रॉय करता हूं, यू नो। और आप चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट आईएएस के स्टूडेंट्स के लिए तो यूट्यूब पे एक फोर्टनाइटली यूट्यूब प्रोग्राम क्रिएट करने वाला हूं, that at least if not for on YouTube, at least for all of you, that busting all these myths that we have built। तुम सोच के देखो एक बार, एक छोटी सी इंडस्ट्री ले लो, रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री। तुम इंडस्ट्री पहले लगाओगे या आरएनडी और वर्कर पहले आ जाएंगे? आप लोग सोच के देखिए, कोई भी बात आप लॉजिक लगा के देखिए। आप अजीब अजीब बात हम लोग कहते हैं 28 नैनोमीटर के चिप्स हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि गाड़ी में 60 नैनोमीटर लगता है भाई। तो मोबाइल बाद में बना लेंगे, तो इसका मतलब एक ही सीधा जाके मोबाइल ही बनाए, या गाड़ी से शुरू करें बात कम से कम। इट्स लाइक तुम बोलो सीधा इंटरव्यू दूंगा वरना यूपीएससी दूंगा ही नहीं। सोच के देखिए। अच्छा छोड़िए, चलिए आपको मैं सोच बताता हूं। आपने पहली शुरुआत एनसीईआरटी से पढ़नी शुरू की थी ना? क्यों? यूपीएससी तो एनसीईआरटी नहीं पूछता। यूपीएससी में एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें एनसीईआरटी से, लेकिन जब तक एनसीईआरटी नहीं समझोगे तब तक कंसेप्ट ही समझ नहीं आएंगे जो यूपीएससी पूछ रहा है। जब रेड्डी जी ने आपको समझाया कि फिस्कल डेफिसिट किसको कहते हैं, तब तो बातचीत होगी ना कि क्राउडिंग आउट क्या होता है। या बिना फिस्कल डेफिसिट समझे ही क्राउडिंग आउट पे जंप करेंगे। तो जब 20 साल लेट हो किसी इंडस्ट्री में, तो पहले दिन से 3 नैनोमीटर चिप्स बनाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट तुम्हारे देश में क्यों आएंगे भाई? तो 3 नैनोमीटर वाले क्यों आएंगे? इतनी सब्सिडी थोड़ी दे रहे हैं। $39 बिलियन तो अमेरिका दे रहा है एक साल का, हम तो 5 साल के $25 बिलियन दे रहे हैं। मतलब तुम लोग के जनरेशन में पता है एक चमत्कारी बात क्या है, जो अभी तुम भी कर, मैं कल अपने बेटे को भी कह रहा था। हम लोग जैसे नहीं जानते थे ना, चुप रहते थे। तुम लोग नहीं जान के भी बोलते हो। चमत्कारी लोग हो तुम लोग। कम जानोगे लेकिन बता के मानोगे कि देखो मैं कम जानता हूं। मतलब बड़े आश्चर्य उसमें। आई एक्चुअली अप्रिशिएट योर जनरेशन ऑन 95 out of 100 थिंग्स। बिलीव मी, आई ऑलवेज विश आई वुड हैव बीन बोर्न 20 years later। मैं अपने बेटों को भी बोलता हूं that I would have wished to be born in your generation. You guys are such lovely blokes. But this part of yours, where you convince yourself with your limited wisdom, unwilling to learn anything new. नहीं अकल तुम में भाई, ये मानो सबसे पहले। नहीं जानते हो, जानो पहले, पढ़ो और ज्यादा उसके बारे में। वरना आप सोचिए, सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर, सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन, इतना सारा खर्चा, सरकार पागल है जो कर रहे हैं। फिर तो दिमाग खराब है उनका। तुम भी वही बनने की सोच रहे हो। इसी खराब दिमाग के साथ यही सब सजेस्ट करोगे तुम भी? क्योंकि अगर सब कुछ द हिंदू जानता है और हम लोग यूपीएससी पढ़ाने वाले जानते हैं, तो सरकार हमें ही चलाना चाहिए। फिर ये जो अविश्वास होता है सरकार के प्रति, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग गवर्नमेंट विल गेट एवरीथिंग राइट, but at least try understanding with some faith that if they are doing it, why are they doing it? Rather than going on criticizing, nothing.
सब बेकार बात है, जानता तो मैं हूं सब कुछ। There is no middle path here. How do you start? That is again a foolish talk that you guys do. I'm sorry for using the word foolish. Foolish का मतलब होता है unarticulate. क्या मिडिल पाथ होगा तुम बताओ पहले, फिर मैं बताता हूं क्यों वो बेकार पाथ है। कौन कौन से सेक्टर हैं पीएलआई में बताओ तो। हाँ तो इस आज के पहले तुम्हें पता तक नहीं था क्या सेक्टर है, लेकिन तुमने व्यू बना रखा था कि कोर सेक्टर बहुत कम है। मैं तुम्हें कॉन्ट्रडिक्शन इन योर ओन व्यूज बता रहा हूं। सोचो तुम अभी बोल रहे हो सर अभी आपने लिखवा रखा है। 8 कोर सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड है। उनको 8 कोर सेक्टर इसलिए नहीं कहा गया है कि उन्हीं की वजह से इकोनॉमी चलती है। किन सेक्टर्स का लिंकेजेस सबसे ज्यादा जरूरी है इकोनॉमी में, ये बताओ मुझे। किन सेक्टर का लिंकेजेस सबसे ज्यादा जरूरी है इकोनॉमी में? सबसे ज्यादा लिंकेजेस किन सेक्टर्स के हैं इंडिया में? किन के हैं ये बताओ। ये कहानी यही हवाबाजी होती है जो ज्यादा रिटर्न दे। नहीं पता है तुम्हें, नहीं पता है तुम्हें, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इनके सबसे ज्यादा लिंकेजेस हैं। लिंकेजेस का मतलब क्या होता है? आगे भी बेचेंगे, पीछे से भी खरीदेंगे। सबसे ज्यादा एमएसएमई से कौन खरीदता है? ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कहां पीएलआई दी जा रही है? इन्हीं में दी जा रही है। सेमीकंडक्टर पे क्यों इंसेंटिव दिया जा रहा है? क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। हम नहीं रिलाई कर सकते किसी और पे कि 20 साल बाद या 10 साल बाद उन्होंने मना कर दिया तो क्या करेंगे। तो 28 नैनोमीटर या 40 नैनोमीटर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 3 नैनोमीटर वाले इमीडिएटली नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में इंजीनियरिंग स्किल्स ही नहीं है, उतने रॉ मटेरियल का क्लॉक डेवलप्ड नहीं है। अब वो तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेंगे। तो शुरुआत कहां से होगी? 1 नंबर से ही होती है ना, 100 से शुरुआत नहीं होती। तो शुरुआत किए 28 नैनोमीटर से, 40 नैनोमीटर से। जब ये शुरुआत होगी तो देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस कंप्यूटर चिप इंजीनियरिंग पढ़ाना शुरू करेंगे। बाहर के इंडस्ट्रीज जैसे विंस्ट्रॉम, जैसे पेगाट्रॉन इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट लगाना शुरू करेंगे। जब वो इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट लगाना शुरू करेंगे तो उसके बाद ये शुरुआत होती है कि वो ट्रेन करेंगे इंडियन इंजीनियर्स को अपने यहां काम करने के लिए, जैसे टाटा ने अब शुरू किया मोरंगांव अपने इंडस्ट्री में। जब ये शुरुआत होगी तो इंडिया में R&D बढ़ेगा। उसके बाद इंडिया इस पोजीशन में होगा कि 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर बना सके ओवर नेक्स्ट 20-25 ईयर्स, और तब हमारी डिपेंडेंस कम होगी। अब तुम कहोगे सर ऐसा होगा, क्या गारंटी है? मोबाइल फोन हमने इंट्रोड्यूस किया 1997 में, जब दुनिया 2G पे चली गई थी, हमने 1G इंट्रोड्यूस किया। तुम्हारे लॉजिक से चलें तो नहीं करो तो 2G करो, वरना फालतू कर रहे हैं। जब 97 में 1G इंट्रोड्यूस किया तो दुनिया 2004 में 3G पे चली गई, हम 2008 में 2G पे जा पाए। दुनिया 2012 में 4G पे चली गई, हम 2012 में 3G पे आए। फिर हम 2016 में 4G पे आए, और 2022 में दुनिया के साथ साथ ही 5G पे आ गए। इसको इकोनॉमिक्स में एक नाम दिया जाता है टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। अब सोचो, अगर ये जो जितने तुम लोग बात बोलते हो ना, ये सब कुछ मैं देख चुका हूं मोबाइल फोन की शुरुआत में इंडिया में। अमीरों का खिलौना है, फालतू लाया जा रहा है, इससे गरीबों को क्या ही बेनिफिट होगा, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, पहले लैंडलाइन पे काम करें, उसके बाद लाए मोबाइल फोन। इसलिए मैं कहता हूं पढ़ो तो कम से कम हिस्ट्री को थोड़ा, कि पीछे क्या हो चुका है। कारण जानने की तो कोशिश करो कि अच्छा ठीक है इतनी सारी गलतियां हैं, और अगर अखबार ये बात जानते हैं और अखबार पढ़ के बोलने वाले लोग ये बात जानते हैं, तो सरकार इतनी पागल है कि ये काम कर रही है। पीएलआई से इलेक्ट्रल बेनिफिट मिलेगा। तुमने इलेक्ट्रल वर्ड यूज किया अभी, ठीक है। क्या बेनिफिट मिल रहा है बताओ, सरकार को क्या बेनिफिट मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन इन इंडिया? मतलब पीएलआई लाने से इलेक्शन फंडिंग होगी भारत में? सवाल ही नहीं है। सैमसंग इलेक्ट्रल फंडिंग थोड़ी देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो तो टाटा वाले देंगे, रिलायंस देगा, अडानी देंगे। और फिर सोचो इलेक्ट्रल फंडिंग सिर्फ केंद्र सरकार की होगी या राज्य सरकारों की भी होगी? और सबसे ज्यादा पीएलआई का बेनिफिशियरी कौन सी राज्य सरकार है? पता करने की कोशिश की तुमने? कौन सी है, अंदाजा लगाओ। तमिलनाडु।
गुजरात निकला सबसे पहले। ये जो प्रॉब्लम है ना, अपने अंदर के एंटाई मोदी को फेंको बाहर, नहीं तो ये एग्जाम 50 साल लिखते रह जाओगे। हम भूल जाते हैं कि हम मोदी जी को क्रिटिसाइज करने के चक्कर में भारत को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, या पॉलिसी को अननेसेसरली क्रिटिसाइज। अभी तो मैं क्रिटिसाइज करके दूंगा तुम्हें ये पॉलिसी, चिंता मत करो। मैं तो हर पॉलिसी में तुम देखोगे तुम्हें लिखवाता हूं बेनिफिट्स चैलेंजेस, क्योंकि यूपीएससी तुमसे वो एक्सपेक्ट करती है। बट तुम्हारे मन में गुजरात पता है क्यों आया? मन में बैठा है डीप इनसाइड, नहीं नहीं ये सब बदमाशी यहीं से हो रही होगी। तमिलनाडु है सबसे बड़े बेनिफिशियरी पीएलआई के, और सेकंड बिगेस्ट बेनिफिशियरी कर्नाटका है, दोनों नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट। इसीलिए मैं कह रहा था, बिना पता किए व्यूज बनाते हो, बिना पता किए, बिना ज्ञान के चक्षु खोल लिए। अब कुछ तो बोल के मानूंगा मैं। कल मैं अपने छोटे बेटे को भी जम के लेक्चर दे रहा था इसी चीज पे, 11वीं में पढ़ता है वो, तो अभी तो खैर छोटा है, तुम लोग और बड़े हो गए, तुमसे ज्यादा उम्मीद है मुझे, मैं कल उसको भी यही कह रहा था कि बिना पढ़े कैसे बात करते हो भाई, पहले पता तो करो 14 कौन। तुम कहते हो कोर इंडस्ट्रीज नहीं है, कोर को कोर क्यों कहा गया पहले पता करने गए कभी हम? सीमेंट, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या कोर है इंडिया में? एक तरफ हम कहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर बंद हो जाना चाहिए यूज होना, दूसरी तरफ कहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर कोर इंडस्ट्री है। ईश्वर ने ग्रे मैटर दिया है, इस्तेमाल करो। कि जब कहते हो कोर इंडस्ट्री क्या कर रही है, जब आप कहते हो 40% वेटेज है कोर इंडस्ट्री का इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया, 40% वेटेज फिक्स किया गया था आज से 26 साल पहले, चेंज कीजिए उसको। भारत बदल गया है बहुत, ये हमारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की गलती है। आप अभी भी कोर पकड़ के बैठे हुए हैं, इसीलिए कोर इंडस्ट्री का ग्रोथ 2% दिखता है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ 13% दिखता है। हम उतने डिपेंडेंट ही नहीं है। कोर इंडस्ट्री में आता है सीमेंट, सीमेंट कोर है किसी देश में? आप सोच के देखिए। या ज्यादा जरूरी इस बात पे होगा कि आपके बाकी के सेक्टर्स, जो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग, तो आपके बाकी के सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, जैसे फूड प्रोसेसिंग, जब तुमने कहा कोर इंडस्ट्री होंगे और इससे कैसे भला होगा देश का, सीमेंट से कौन सा गरीबों का भला होगा? या टेक्सटाइल से ज्यादा भला होगा, या फूड प्रोसेसिंग से ज्यादा भला होगा? सोचो। बस इसीलिए बोलता हूं, तुम लोग मेरे लिए वही हो जो मेरे 2 बायोलॉजिकल बेटे हैं, उससे अलग कुछ नहीं दिखते तुम लोग, ऐसे ही बेटे बेटियों की तरह दिखते हो। जब अखबार से अधिक प्रभावित देखता हूं तो चिंता होती है मुझे। अपने अंदर के कॉन्शियसनेस को चेक करो, इतना ज्यादा किसी के प्रति प्रेम या किसी के प्रति हिकारत नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा दिखे ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें यूपीएससी कंपीट करना है। मोदी जी चले जाएंगे 20-30 साल में, जिंदा कितने दिन रहेंगे? देश रहेगा हमेशा। तो अगर उनके प्रति नफरत भी इतनी हो गई कि हमें सब कुछ उनका किया हुआ गलत लगे, आसानी से हम मान लें, रादर देन काउंटर व्यू ढूंढने के, तुम्हें बता देता हूं इसका बड़ा आसान क्रॉस चेक है। When you read the newspaper and they're criticizing the government, if you accept everything easily, yeah, true, this is also wrong, and then try reading Yojana, 2 chapters, and immediately if you are anti-government from within, your mind will start giving you the counter views. If Yojana will write, these many villages have been covered under Jal Jeevan, ऐसा थोड़ी है, देखा है मैंने अपने गांव में नल में पानी आता नहीं है। That shows you are anti-government, anti-system. Be careful, don't be that. You want to become a bureaucrat, you have to be a part of the system. So even when you criticize the system, you criticize it with solutions given. फिर मैं कहूंगा 28 नैनोमीटर क्यों बना रहे हैं? नहीं, क्योंकि गाड़ियां चलती है 28 नैनोमीटर पे, ड्रोन्स चलते हैं 28 नैनोमीटर पे, 40 नैनोमीटर पे, 60 नैनोमीटर पे, टेलीविजन चलते हैं 60 नैनोमीटर पे। मोबाइल फोन ही बनाने के लिए थोड़ी माइक्रोचिप बनता है। हम मोबाइल फोन पकड़ के बैठ जाते हैं। और चलो मोबाइल फोन पे आ जाओ, एप्पल को हमने इनवाइट किया, पीएलआई में एप्पल आए, अब 3 साल के अंदर एप्पल के 4 मेजर सप्लायर्स इंडिया में आ गए हैं, और एक उनमें से शेयर कर रहा है टेक्नोलॉजी टाटा ग्रुप के साथ। अब समझिए, थोड़ी बातें दिमाग खोलिए। 7 साल 8 साल पहले जनधन योजना के बारे में क्या बोलते थे? कोई नहीं आता, जीरो बैलेंस अकाउंट है, लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। अब कोई क्रिटिसिज्म नहीं जनधन अकाउंट की, क्योंकि जो जो क्रिटिसिज्म हुई थी सब गलत। यही मैं कह रहा था, हमारे क्रिटिक्स की बड़ी अच्छी आदत है, क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज, प्रूवन रॉन्ग, क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज, प्रूवन रॉन्ग, क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज, प्रूवन रॉन्ग, क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज। That's such an interesting thing to do.
कि हर जगह मैं 1991 से पढ़ता आ रहा हूं ये सब कुछ। एक दिन सारे एफडीआई चला जाएगा, इंडिया में वापस बैंकरप्सी हो जाएगी, वी विल बी डिपेंडेंट ऑन द ग्लोबल वेस्ट अगेन। 33 years आई एम वेटिंग फॉर दैट टू हैपन एंड दीज गाइज डोंट इवन से सॉरी। आप 3 साल पहले याद कीजिए, रघुराम राजन जी ने कहा था इंडिया एवरेज ग्रोथ रेट विल बी 5% per annum. We are in the new Hindu rate of growth. Last 3 years our average growth rate has been above 7.5% per annum. He doesn't say a sorry that I got it so horribly wrong. In our profession, getting it horribly wrong is okay. You know, as an economist, I can tell you that we can get things horribly wrong, but we say sorry when we get things horribly wrong. I have seen a new culture in our country and globally also, where they don't say sorry for getting things horribly wrong. So be careful. Criticism जब कुछ हो रही है, अच्छी बात है, critics का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी चेक करना जरूरी है कि अच्छा अदर साइड ऑफ द व्यू क्या है। तो जब आप कहते हैं इतने पैसे में बहुत कुछ किया जा सकता था, फिर आप सोच के देखिए, जब हम कहते हैं इतने पैसे में हम एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट वो पैसा यूज करे ना। हम स्टेट गवर्नमेंट को बोलें कि लड़की बहन योजना मत लाओ, इलेक्शन जीतना है तो 5 साल लड़की और बहन को पढ़ाने पर काम कर लो, अपने आप इलेक्शन जीत जाओगे, रादर देन शिंदे पार्टी क्रिएट करने के, अजीत पवार क्रिएट करने के। ये सब हरकत की तो हार जाएंगे इलेक्शन। अगर काम किए होते तो जरूर जीतते इलेक्शन। बात ये होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी जो मर्जी हो, मेरा खर्चा थोड़ी चला रहे हैं। तुम लोग ऐसे क्यों नहीं सोचते, मुझे आश्चर्य लगता है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कौन सा मेरे घर का खर्चा चला रहे हैं भाई कि मैं उनके तरफ से बोलूं? सही तो मैं बोलता ही हूं। तो अपने प्रेम को या तिरस्कार को उस हिसाब से ही मॉडरेट करो। बट पीएलआई के केस में चैलेंजेस क्या है मैं आपको वो बताता हूं, क्यों पीएलआई अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सो यू राइट इन दैट नाउ, यू राइट चैलेंजेस। और जब भी आपको कोई बोले, किसी भी कोई भी, मैं भी अगर बोलूं कोई क्रिटिसिज्म, तो आपका एक नॉर्मल सवाल होना चाहिए कि हाँ सर तो फिर सॉल्यूशन क्या है। ये धंधा थोड़ी चलेगा क्रिटिसिज्म करके निकल लूं मैं। उन्हें बताइए फिर क्या करें, और जो आप बताएंगे फिर मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा। देखें आप में पेशेंस है या नहीं वो सुनने का, क्योंकि मैं वो भी देखता हूं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, फिर आप उनसे बोलिए ठीक है आप क्या सजेशन देते हैं, फिर वो सजेशन देंगे, आप उनको क्रिटिसाइज कीजिए, वो बेचारे गुस्सा हो जाते हैं। तो आप ये समझिए, अ गुड डायलॉग इज व्हेन ऑल साइड्स आर विलिंग टू लिसन टू ईच अदर आफ्टर, अगेन आई रिपीट, हैविंग एजुकेटेड देमसेल्व्स अबाउट थिंग्स। एजुकेट करो, तुम लोगों से तो मैं हमेशा बोलूंगा एजुकेट करो। कभी योजना भी पढ़ लिया करो, नेक्स्ट आईएएस मेहनत करके योजना की समरी लिख के देता है तुम्हें, कभी टाइम निकालो उसको पढ़ने का। कभी कुरुक्षेत्र की समरी भी पढ़ लिया करो, पता चलेगा देश में हो क्या रहा है। अखबार तो ये बता रहे हैं कि देश में क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये भी तो जान लो क्या हो रहा है, तब तो बैलेंस मिलेगा। साइट का फुल फॉर्म बताओ मुझे। SIGHT साइट का किस फील्ड के लिए है साइट? चलो शुक्र है, इज्जत बचाई तुमने सबकी, ठीक है। इट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। अब खुद से पूछो कि मैं जानता भी क्यों नहीं हूं इसके बारे में, जबकि ये 1.5 साल पुरानी स्कीम है। तैयारी कर रहे हो तुम ये जानने की कि देश में क्या नहीं हुआ। क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी साइट के, वो मैं बताऊंगा तुम्हें, तुम चिंता मत करो, इसीलिए कोचिंग लगाई तुमने। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा इन बातों के बारे में। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है हो क्या रहा है, तुम पढ़े रहते हो क्या नहीं रहा। इसीलिए तो 95% लोग फेल होते हैं इस एग्जाम में, क्योंकि वो सिर्फ अखबार पढ़ के जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है मेरे चारों तरफ जो हो रहा है, जो अखबार मुझे नहीं बताएंगे। दे वोंट टेल मी अबाउट इट। तो आप ये समझिए, बजट, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, अदर सब्जेक्ट अदर प्रोफेसर्स कैन टेल यू, बट बजट, इकोनॉमिक सर्वे, these are important things to look into to find out what's happening on the ground. This whole system is about how much knowledge do you have. You know what newspapers play on? They know that you have lesser knowledge than what they have, and they are your only source of knowledge. Once you start breaking that mold and you say no, I will have other sources of knowledge other than you, कम से कम कुछ मत करो, इन डेप्थ एक प्रोग्राम आता है सनसेट टीवी पे, देख लिया करो, 15 मिनट का प्रोग्राम होता है हर दिन। कभी मेक इन इंडिया डिस्कस करते हैं, कभी किसी दिन गति शक्ति योजना डिस्कस करते हैं। वो यूपीएससी के लिए मेरे हिसाब से बना हुआ प्रोग्राम है।
15 मिनट्स इन डेप्थ बोलते हैं उसे, सनसेट टीवी पे आता है। यूट्यूब पे सर्च करना सनसेट टीवी या सर्च करना इन डेप्थ सनसेट टीवी, तुम्हें रोज एक प्रोग्राम 15 मिनट का देखने को मिलेगा जो कुछ ना कुछ बता रहा होगा कि हमने क्या किया नहीं किया, एक गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वो भी तो तुम्हें पता होना चाहिए, वो बिना जाने कैसे बात बनेगी। तो ऐसे खुद को एजुकेट कर लो, बस ये सजेशन है मेरा, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम सब कंपीट करो, दैट इज माय बॉटम लाइन। बट वो तभी होगा जब तुम बैलेंस्ड व्यू रखोगे रादर देन हेवीली क्रिटिकल व्यू। क्रिटिसाइजिंग द अथॉरिटी लुक्स हीरोइक, एक ये भी दिमाग में रखना, क्योंकि वी आर डेवलप्ड एंटाई अथॉरिटी, ये हमारे देश की अपब्रिंगिंग है, हम एंटाई अथॉरिटी बड़े ही होते हैं। तो कोई क्रिटिसाइज करता है ना अथॉरिटी को, तो हम मानते हैं ये हुआ हीरो, इसमें ताकत है सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की। बट ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता जो सिस्टम ज्वाइन करने वाले हैं। तब तो तुम उसको हीरो बोल रहे हो जो तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन करेगा तुम्हारे ऑफिस के सामने बैठकर, बिना तुमसे बात करने के मूड में। तो उसको हीरो मत मानो कम से कम। तुम्हारे हीरो वो लोग होने चाहिए जो सिस्टम के अंदर रहकर मेहनत करके सिस्टम को सुधार रहे हैं। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट रिजाइनिंग, who are not on page 3, who don't give interviews on YouTube, but they are working within the system to make the system as good as possible, as wonderful as possible. You should aspire to be those, so just be careful on that. Anyways, तो पहला challenge लिखते हैं, you write number 1, if value addition is lesser, एक और बात तुम्हें उसी में बता देता हूं, कुछ चीजों पे मोटिवेट मत होना। जैसे इलेक्टरल बॉन्ड में देखिए बीजेपी ने कितना पैसा लिया, इसका मतलब हम ये सोच रहे हैं कि इलेक्टरल बॉन्ड के थ्रू ही पैसा लिया जाता है। पैसे लेने के 1000 तरीके हैं इस देश में। तो इलेक्टरल बॉन्ड से बीजेपी को क्या फायदा था? क्यों इलेक्टरल बॉन्ड अच्छा हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने एनोनिमिटी खत्म की उसकी। बीजेपी को यह फायदा था कि वो कानूनी रूप से पैसा ले लेते थे, और बाकी लोग जब गैर कानूनी रूप से पैसा लेते थे तो उनके यहां ईडी भेज देते थे और कहते थे देखो ये चोर है। क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए, इलेक्शन लड़ना है। एवरीबडी हैज टू कीप मनी टू फाइट दीज इलेक्शंस। डोंट थिंक इट वाज एक्सीडेंटल दैट द गवर्नमेंट did a demonetization just 2 months before UP elections, which they badly wanted to win. And don't think it was accidental that 1 year before the general election, they came in and said 2000 rupees notes gone. It was not accidental. It's planned. लोग अपना वॉर चेस्ट 3 साल 4 साल पहले से तैयार करना शुरू करते हैं कि इलेक्शन आएगा, जनरल इलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा पैसे चाहिए, खर्च करूंगा। तो सबसे ज्यादा किस टर्म में होगा? 2000 के नोट में। जनरल इलेक्शन के 1 साल पहले क्या कहिए? 2000 के नोट खत्म। अब जिन्होंने भी वॉर चेस्ट तैयार कर रखा था धराशायी हो गए, जैसे मायावती जी। चारा ही नहीं कुछ, जीते कैसे इनसे? तो आप समझिएगा मेरी ये बात, ये पॉलिटिक्स ऐसे चलता रहेगा, वो अपना उनका नॉर्म है। बट यू डोंट हैव टू मिक्स पॉलिटिक्स इन एवरीथिंग, जस्ट बी केयरफुल। तुम्हारे आंसर्स ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बाकी चीजों के भी होंगे, हर जगह पॉलिटी नहीं आनी चाहिए। ऑल राइट, देन यू टेक दिस फर्दर, यू राइट, सो वैल्यू एडिशन, could you tell me the language you wrote? Yeah, is lesser than, if the value addition is lesser than subsidy given under the scheme, then it will be a loss to the economy. Okay, I hope you get the point. If I'm adding value worth 2%, say how will I do that? Suppose you have given me a target of 15,600 crore. I import commodities worth 14,000 crore and I add 1,600 crore value in your country. Or say I import commodity worth 15,400 crore and I add value worth only 200 crore in your economy. I meet the target still, everything will be made in India. But that will mean that out of that 15,600 crore, only 200 crore was made in India, the rest was made outside India.
and that is then a loss to the economy because we are paying a 600 crore subsidy for a 200 crore value addition. So we have to be conscious that doesn't happen. Now again telling you the reality today, in mobile phones we are adding 19% value in India, 19. In automobile we are adding 46% value in India. In pharmaceutical we are adding 38% value in India. In leather goods we are adding 49% value in India. So right now this challenge is not being observed, but we should still be conscious what if. You know, that consciousness has to be there. Second, you write lack of infrastructure development will restrict possibility of growth in the scheme, possibility of growth in the scheme. So you know, that's another thing, that lack of infrastructure development. I'll tell you an example. We need good enough roads, electrification, storage capacity, measurement facilities, packaging facilities. All these are needed at a much higher scale if we want to scale up our industrialization. But you look at the presence of all these things and you will see that they are not as much as what would be needed if I'm planning to produce 40 lakh crore rupees of industrial product in PLI alone. Don't forget that that is the plan, no? That उसके अलावा ये थोड़ी कि PLI का 40 लाख करोड़ के अलावा कुछ production नहीं होगा. PLI 40 lakh crore, then there will be input suppliers who will supply things, then there will be other manufacturers who will get orders because of PLI growing. You understand that? For example, you give PLI in textile sector. Somebody in textile earns money. That money they use for buying furniture. Furniture is not under PLI, but now with demand rising for furniture, that output will also grow. And you need to cover for that too. Do I believe I reach you on this? That again is a challenge. We have to be prepared, well prepared. At the moment we are not very well prepared on that. अब आप समझिएगा लैंग्वेज, जो एक और चीज में तुम लोगों को सिखाना चाह रहा था. क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम लोग, चैलेंजेस बता रहे हैं, लेकिन किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं? कैन, मे, इफ. यू अंडरस्टैंड दैट? क्योंकि ये सच में थोड़ी हो रहा है अभी, ये हो सकता है. जो भी क्रिटिसिज्म आप अखबार में भी पढ़ते हैं वो क्या होता है? ऐसा हो सकता है. तो वही लिखिए ना कि ऐसा हो सकता है. यू शुड नॉट स्टार्ट राइटिंग यही होगा. एज लॉन्ग एज तुम्हें कोई यौगिक पावर है तो अलग बात है. योग सिद्धि से अगर तुम फ्यूचर देख पा रहे हो तो वो अलग बात है, पर नहीं देख पा रहे तो हम तो उस मामले में हम और तुम बराबर इंटेलिजेंट हैं. None of us know what will happen exactly in future. So bring up the challenges like, oh look, we don't have enough infrastructure, we need to create that. Oh look, value addition should be high enough, we need to be careful about that. You understand that? What will that look like? It will look like being supportive but highlighting the problems. You understand that? That is the basic idea. आपको एक एग्जाम्पल देता हूं आपके लाइफ से. 10th स्टैंडर्ड के आप, पापा मम्मी बैठे हुए हैं, आप पहुंचे, मैं जरा दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं. दोनों में से एक ने सिर उठाया, कोई जरूरत नहीं है, बेफालतू जाओगे बाहर, पैसे बर्बाद करोगे, टाइम खराब करोगे, इससे अच्छा पढ़ लो. अच्छा, आपको गुस्सा आया, इनको फेथ क्यों नहीं है मुझ पर. दूसरे ने मुंडी उठाई, कहाँ जाएगा बेटा? XYZ जगह जा रहा हूं. अच्छा, ऐसा कर, 1.5-2 घंटे के लिए जा, पैसे चाहिए? नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए. अच्छा, इतना रख ले, जो खर्च हो गए रख लेना, ध्यान रख लियो कहीं वेस्ट ना हो जाए, और दोस्तों के साथ कुछ उल्टा सीधा हरकत मत करियो, तू फंस जाएगा. अब क्या लगा? ये मेरे सपोर्ट में है. दोनों आपको एक ही बात कह रहे थे. एक ने तमीज से कही तो आपको लगा वाह क्या शानदार इंसान है, यही तो है मेरे पापा होने लायक. और दूसरे ने थोड़ी बदतमीजी से कही तो लगा क्या इंसान के घर जन्म ले लिया मैंने. तो आप समझिए, how you speak something, speak the nastiest of things, but speak them in a manner which sound reasonable and you will get things better. इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, एक चाइल्डहुड और पेरेंटल एग्जाम्पल से. You become, तो यही आपको करना है आंसर लिखते हुए. You criticize the government, we are criticizing it right now, but criticize it in a manner where you sound solution oriented rather than problem mongering. You understand that? So
अगेन आई रिपीट, जब ईश्वर करे तुम आईएएस बन भी जाओगे, तुम्हें सिस्टम की कोई दिक्कत नजर आएगी, तुम क्या बोलोगे? ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तुम कहोगे ना ये दिक्कत है, सॉल्व कैसे किया जाए, चलो सोचा जाए फिर। सो यही अप्रोच तो वो ढूंढ रहे हैं तुम्हारे मेंस के आंसर शीट में, that is this person writing in this manner in the mains answer or not, then you are capable to be an IAS officer. If you are not writing that in the mains examination, then you are capable to be a journalist. फिर जाके हिंदू अखबार में आर्टिकल लिखिए, क्योंकि आपको क्रिटिसाइज करना आता है। ये समझा रहा हूं, दैट बी वेरी केयरफुल, अल्टीमेटली इट्स योर फ्यूचर एट स्टेक। मैंने तो अपना बना लिया है। so you have to be doubly careful of your language, that way you, when you are, and again I'm saying it's not at all that you should not criticize government, that will make you look like an imbecile कि अरे ये तो क्रिटिसाइज ही नहीं करते, ये तो चमचा है। क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड विद अ पॉलिश्ड लैंग्वेज, everybody then platters it. Okay, third, then you write there is possibility that firms might use capital intensive technology if labor market in India does not improve. Labor market in India does not improve. I will explain this to you. You give me some time, a little while. But just one thing, the labor market in India is very rigid. That is why the firms replace labor by capital, machines. So how is it rigid? One, very difficult to remove a worker once you have hired the worker. Now the point is, that may give a lot of protection to the worker, but that also creates complacency in the workforce, compromising on the marginal productivity of the worker. Because the worker now knows I cannot be removed. So in that case, there is no question that you can make the worker work beyond a point. Also, there are certain industries where you don't need the worker full time. Say for example, sugar industry. Say for example, textile industry. So then in that case, contractual labor is something that people are doing today in India anyways, but it is just done through the unorganized sector rather than through a rule of law. So these are some challenges. Other than that, we have 144 different types of labor laws in India. Now remember, when you have multiple labor laws, it doesn't help the workers, it helps the industrialists, because they can find a clause in one of the laws which can help them in case of a dispute. So these are challenges of labor laws in India, which I will teach you in detail. And due to that, labor is not employed in India, rather machines are used. So if we don't improve on that part, we will not be able to, PLI won't give us a success. So what's the moral of the story? Moral of the story is, one more point you write and then we go further. You write, lack of transparency in choice of industries, and choice of firms within the industry can lead to rent seeking and nepotism. Rent seeking, you all recall? Bribery. Can lead to rent seeking and nepotism. Again, you see the language? We are saying the same thing, that look, there is no transparency in the way you are selecting people. So in that case, there will be rent seeking, there can be nepotism. We have to be careful, it shouldn't happen. So that is the way to again approach things, that look, now, when you are concluding, how do you conclude? You will conclude by suggesting the solutions. Sorry. That is, have a regulatory authority, have a transparent mechanism of selection of firms, make sure that firms are adding enough value within the country and that should be measurable, linkages are well established, and so on. You understand that? So once you have developed that, देखो industrialization को promote करने का, अभी जो मैं discussion में भी आपको सिखा रहा था,
पर्पस ये नहीं होता कि कौन सी इंडस्ट्री बड़ी है, पर्पस ये होता है कि कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा लिंक्ड है। अब सोचिए, मैंने ऑटोमोबाइल का एक नाम लिया, समझिएगा मेरी बात। Why is automobile selected as a part of PLI in India? Because when you promote automobile industry, look at a broader issue. You are promoting tire manufacturing, you are promoting steel manufacturing, you are promoting ball bearing manufacturing, nuts and bolts manufacturing, rubber manufacturing, cotton manufacturing, seat cloth manufacturing, foam manufacturing. They are all linkages of automobile industry. You understand that? और ये जितने कंपनीज के सेक्टर्स के मैंने नाम लिए, ये मैक्सिमम एमएसएमई में है। Whether it is the foam manufacturer for seat of automobile, cloth manufacturer for seat cover of automobile, ऐसा थोड़ी गाड़ी अपने आप घटोत्कच की तरह टपकती है आसमान से। गाड़ी बनाने में ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, और ये सारी चीजों का लिंकेजेस है भारत में, जिसको आप कहते हैं ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये इन इंडस्ट्रीज को इसीलिए सिलेक्ट किया जाता है, दैट इनको सिलेक्ट कीजिए ताकि इनके जो ब्रांचेस हैं वो बहुत वाइड हो जाएं फिर। So you don't have to give PLI to everybody, but you will give PLI to particular industries which you would like to reach out to. Similarly, think electronics industry. Now, electronics doesn't only mean mobile phone. Electronics will also mean a tape recorder, now not much in use, but say wherever it is used. Electronics will also mean televisions which are smart in nature. Electronics will also mean say refrigerators which are smart in nature. Electronics can also mean laptops. Electronics can also mean your desktops. ये सब electronics हो गए ना भाई। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक, इसीलिए मैंने कहा कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, अब एक लैपटॉप बनाने में सिर्फ माइक्रोचिप थोड़ी लगता है, उस लैपटॉप का कवर आता है जो प्लास्टिक का होता है, तो एक प्लास्टिक इंडस्ट्री को भी उससे मदद मिलती है। उस लैपटॉप के जो कीबोर्ड बनता है उसके ऊपर कंपोनेंट्स होते हैं सिलिका के, तो सिलिका, प्लास्टिक, आयरन, इन सभी इंडस्ट्रीज को मदद मिलती है। तो आपको देखने पड़ेंगे लिंकेजेस कहां हैं मेरे, किन इंडस्ट्रीज के। उस लैपटॉप के थ्रू, उस मोबाइल फोन के थ्रू एलईडी स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग को मदद मिलती है। So when you talk about industrialization, you will have to look at the economics of it, go into the depth and find out, okay, if I touch one sector, how many other sectors will feel the radiation? And if one sector can give maximum radiation to other sectors, that becomes the idea of choosing that sector in a scheme like PLI. You understand this? मैं वापस तुम्हें बोलता हूँ, मैं सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा भी तुम्हें, वो मैं एंड में करता हूँ एमएसएमई पढ़ाने के साथ, पर मैं वापस तुम्हें कहता हूँ, जो भी क्रिटिसिज्म आप सेमीकंडक्टर के पढ़ते हैं वो गलत बिल्कुल नहीं है, आज की डेट में ट्रू है, बट आपको यही बताना पड़ेगा कि ये आज के डेट में ट्रू है। देन व्हाट ऑल शुड आई डू सो दैट दीज क्रिटिसिज्म्स कैन बी इंप्रूव्ड इन फ्यूचर, रादर देन सेइंग हेंस वी शुड नॉट डू इट। यू अंडरस्टैंड दैट? यू कांट हैव, अगेन आई रिपीट, यू कांट हैव पीपल। R&D क्या होता है सोचिए, R&D होता है एज द अपर एंड ऑफ द सप्लाई चेन। बट R&D कहां करेंगे आप? जहां पे मार्केट दिखे ना आपको। मार्केट कहां दिखेगा आपको? कोई आपका R&D खरीदने वाला हो, या फिर आप ही उस R&D का फायदा उठा के प्रोडक्शन करने वाले हो। तो R&D करने के लिए इंडिया में पहली रिक्वायरमेंट क्या है, जिस पर फिर जो मेरे मित्र लोग हैं लेफ्ट विंग के वो गुस्सा हो जाएंगे। पहली रिक्वायरमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आसान बनाइए। पर जैसे ही आप कहेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आसान बनाओ, ये नहीं हो सकता, हम पेटेंट राइट इंडिया में स्ट्रांग नहीं होने देंगे। तो जब आप पेटेंट राइट स्ट्रांग नहीं होने देंगे तो किसी का दिमाग खराब है कि आपके यहां आके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। आप जितना मर्जी चिल्ला लीजिए कि R&D कराइए मेरे घर में, क्यों करूं मैं भाई? मेरे R&D को तुम ओवरनाइट फोटोकॉपी करो, इसीलिए नहीं करता मैं, इसीलिए आके इंडिया में R&D। नो मैटर हाउ मच यू कैन शाउट, इंडियन फर्म सेट अप देयर R&D प्लांट्स इन सिंगापुर बिकॉज आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर वीक। So if we want R&D in any sector, we will have to first work on our intellectual property right mechanism. तो हम लोग चीजों के डेप्थ में नहीं जाते, हम वो देखना चाहते हैं जो मेरे लिए कन्वीनियंट हो। ये हमारे देश के इंटेलिजेंसिया को देखता हूं मैं मिस्टेक करते हुए। R&D is directly connected to IPR, but nobody talks IPR in our system so easily because they know that if we talk IPR, then that goes against my ideological view that there should not be a patent right in a depth in India.
So if there will be no patent right in a country in major depths, why will anybody innovate in that country? Rather, the person will go to some other country to do it, like a Taiwan or a Singapore. तो आप ये समझिए दैट जब आप कहते हैं ना ये आना चाहिए मेरे देश में, तो सवाल ये तो पूछिएगा अच्छा आज तक क्यों नहीं आया? और ये मिस्टेक कभी मत कीजिए कि मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं और बाकी लोग तो कम। आप सोच के देखिए, मैं इकोनॉमिक्स जानता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, वो भी मुझे लगता है कि मैं जानता हूं। तुम में से कोई होगे जो पॉलिटिकल साइंस से आते होगे, कोई होगे जो हिस्ट्री पढ़कर आए होगे, कोई इंजीनियर होगे, तुम ये सारे सब्जेक्ट डेफिनेटली मुझसे ज्यादा जानते हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। So in that case, if you are say an engineering graduate and you are trying to tell me something on it, I will be willing to listen to that. Then okay, if somebody is saying this, okay, this can be a thing. If somebody is from science background telling me, look sir, these are the issues in say semiconductor industry in India. जैसे जो व्यूज अभी हम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, आपने अयाज सर को सुना होगा, सेमीकंडक्टर को क्रिटिसाइज करते हैं। तो अयाज सर और मेरी इस बारे में हमेशा चर्चा होती रहती है, और both of us agree and disagree with many things that each other say. That is called intellectual discussion. He is one of my best friends at Next IAS because we choose to discuss many things together, laugh together on many things while discussing, but we do contradict each other. क्योंकि फिर वही नहीं, मैंने कहा सारी चीजों पे अग्री कर रहे हो तब तो कहीं चमचागिरी कर रहा है एक दूसरे की, कोई ना कोई एक चमचा है उसमें। डिसएग्रीमेंट तो होगी ही दोस्ती में, कि आपको ये सही लगता है, नहीं मुझे तो लग रहा है लेकिन ये चीज भी है, तो ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स के व्यू उनको बता देता हूं, वो साइंस के व्यू मुझे बता देते हैं, हम दोनों गेन कर गए। लेकिन अगर तुम अलग अलग सोचोगे तो पेपर 3 में वो ये लिख के नहीं देते कि ये आंसर साइंस का है और ये आंसर इकोनॉमिक्स का। पेपर 3 मतलब साइंस एंड टेक भी और इकोनॉमी भी, सो योर आंसर हैज टू रिफ्लेक्ट बोथ। तो अब साइंस पे अगर अयाज सर ने कोई क्रिटिसिज्म की, उनकी पूरी बात मान लीजिए, इकोनॉमिक्स पे उन्होंने कोई क्रिटिसिज्म की, मत मानिए। मैं अगर साइंस पे कोई तारीफ करूं या क्रिटिसिज्म करूं, मेरी बात मत मानिए, उनकी मानिए। वो साइंस डेफिनेटली मुझसे बढ़िया जानते हैं, इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली उनसे बढ़िया जानता हूं। तो कंफ्यूज मत होइए कि अच्छा एक टीचर ने ये कह दिया, दूसरे टीचर ने ये कहा, अब मैं क्या करूं? तुम दोनों लिखो, तुम्हें बोथ साइड्स ऑफ द व्यू मिल गए। सो यू शुड बी थिंकिंग लाइक दैट रादर देन गेटिंग कंफ्यूज। क्योंकि बाद में कभी कभी मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सर फिर हमें लिखना कौन सा वाला है? दोनों, हम दोनों में से किसी का दिमाग खराब नहीं है। So both of us are talking sense to you in a way you can listen to one sense in one way. तो उस तरह से सोच के लिखो, और हमेशा याद रखना challenges या criticism, the language should always be very polished because that is what will fetch you marks. Ultimately you got to score your 1000 out of 2000. Finally तुम्हें वो नंबर लाना है 1000 कि IAS बन जाओ, इसको अपने दिमाग से जाने मत देना। Anyways, ये तो एक कहानी हुई PLI। अब सेकेंड स्टोरी वी गो, सो वी वर डिस्कसिंग स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट मेक इन इंडिया। अब आप लिखिए 2 सेकेंड स्टेप। सब लोग समझ गए मैं क्या सेकेंड बोल रहा हूं? ठीक है, ऑल राइट, यू राइट सेकेंड, यू राइट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड, government has increased capital expenditure in the budget from less than 2.5 lakh crore rupees, of course 2.5 lakh crore to more than 11 lakh crore rupees, again 11 lakh crore between 2020, जब मैं बोलता हूं 2020 it means 2019-20, so between 2020 and 2025 and 2025. When I say 25, I mean 24, 25. In the same thing, you please write this will be used to improve
infrastructure development for reducing logistical cost. I hope everybody understands logistical cost. For reducing logistical cost. Full stop. Government has also introduced Gati Shakti program. I will teach you these when I'm teaching you infrastructure. Right now you just write the names. I will teach you these programs. Gati Shakti program and National Logistics Policy to reduce logistical cost in India. In the same thing you write, government has also provided logistical sector with infrastructure status to improve its performance. Okay, try understanding one thing. When we use the term infrastructure status, it has three advantages. एक तो ये status सिर्फ सरकार दे सकते हैं किसी भी industry को. Only the government will declare that okay, this industry is now an infrastructure status industry. Three advantages. Number one, more loans are available. Infrastructure status industries can issue more loans more bonds in the market, take more loans from the market. So more loans are available. Number two, cheaper loans are available. Industries with infrastructure status are eligible to receive interest subsidy. So cheaper loans are available, less interest cost. And number three, file clearance is faster. So more loans, cheaper loans and faster file clearance. तो अगर किसी को भी infrastructure status मिला, उन्हें तीन advantage मिलेंगे, ज़्यादा loan मिलेंगे, सस्ते loan मिलेंगे और file clearance जल्दी होगी. So whichever sector gets infrastructure status will be eligible for more loans, cheaper loans, less interest rate, and they will also get faster clearance of files. So this is what has been done by the government. All these are steps to improve logistical system in India. All right. Again, when we will criticize, I'll bring out the challenges that still remain in these things. Then you write next, third point. Government has reformed. Have you done corporate tax and all with Reddy, sir? All right, perfect. Government has reformed taxation system by introducing GST and by reducing corporate tax to encourage investment. Corporate tax reduction favors the rich, has nothing in it for poors. Discuss. क्या होता है भाई? क्या क्या है कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन? अब याद करिए, आपको रेड्डी सर ने पढ़ाया होगा. One is 25%
plus surcharge for firms with less than 400 crore turnover. ठीक है, ये नहीं किया आपने, पक्का नहीं किया आपने, तो अब करिए मेरे साथ, ठीक है। ये कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म, यू हैव डन फिस्कल पॉलिसी विद रेड्डी जी. What are you doing with him these days? What was the last topic you did with him? Normally he covers it, that's why I'm asking you. बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके, तो आप मेरे साथ सीख लीजिए, या शायद उन्होंने किया होगा, आप मिस कर गए होंगे, अभी याद नहीं आ रही होगी बात, कि नॉर्मली वो करते हैं ये आपके बैच क्लासेस में. आई सी माई कलीग्स नोट्स बिफोर आई टॉक टू यू. बट एनीवे, सो लेस देन 400 करोड़ रुपीज इज वन थिंग दैट, देखो नॉर्मली कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में था 30% प्लस 15% सरचार्ज, ठीक है, दैट्स इफेक्टिवली 34.5%. ये कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में लगता है कि अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं ये टैक्स देना पड़ेगा. तो फिर 2019-20 में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन रिफॉर्म्स. वन ऑफ देम वाज दैट 25% प्लस सरचार्ज in case of a firm it will have less than 400 crore turnover. All right, तो ये किन firms के लिए किया गया? Not for everyone, but those who are relatively smaller in size. Firms with less than 400 crore turnover, you pay 25% plus surcharge as the tax. So effectively this became 27.5%, a 7% reduction for these firms. The second thing, so one say, the second thing was 22% tax rate for firms which will not claim exemptions. All right, that's another thing. 22% tax rate for firms which will not claim exemptions. अब exemptions क्या होते हैं? जो सरकार आपको अलाउ करती है, that okay, if you have spent on a particular activity you can deduct it from your profitable taxable profit. If you have helped some particular set of people you can deduct it from your taxable profit. आप समझ रहे हैं? छूट कहते हैं जिसे टैक्स पर. All right, कि इतना छूट मिलेगी आपको. So if you have spent on infrastructure development you are allowed to deduct it from your profit income and so on. So what many companies used to do was that they actually did not make those expenditures, but they would show it on paper that they have made those expenditures and then claim the refund from the, or claim the rebate from the government. You understand the story? Now think what happens. Suppose you are an honest company, you earn 100 rupees profit. I am a dishonest company, I also earn 100 rupees profit. You are honest, you don't claim false exemptions, you go ahead and pay 30% tax to the government. So you pay 30 rupees on 100 rupees. I am someone who is dishonest. I arrange all those certificates and claim to the government that I have made an expenditure and I pay a tax not on 100 rupees. I get the expenditure deducted. You understand that? And then I pay it only on 90 rupees. So 30% of 90 rupees is what I pay as tax, say 27 rupees. Now you will feel bad that look, this fellow is a thief and this fellow could save 3 rupees only because this fellow could hoodwink the government. I am an honest person and I am paying to be honest in this country. You get the story? जो ऑनेस्ट है उनके मन में आएगा भाई मैं ईमानदार हूं तो ज्यादा दे रहा हूं, ये देखो बेईमान है चोरी करके नहीं दे रहा. तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे दिया कि ठीक है अगर आप ऑनेस्ट हैं और आपके एग्जेम्पशंस वैसे भी नहीं आते, then if you don't claim any exemption from us, we will give you an 8% tax rebate. What does that do? One, the honests now don't have to feel bad that why am I honest. Two, the dishonest get an incentive that look, why should I remain dishonest? With honesty I can pay 22% tax rate. You understand that? So this is again an improvement in the tax mechanism. For purpose was that I'm explaining to you why these reductions were done. क्योंकि again जब आप अखबार में पढ़ते हैं तो उसको लिखा जाता है corporate taxes have been reduced in India to benefit the rich rather than helping the poor. I'm trying to tell you why they were reduced and why it is not necessarily only a benefit to the rich. Third thing that was done was that 15% tax rate for startups established between October 2019
to March 2024 for 5 years कि जो भी स्टार्टअप होंगे, नई कंपनी खोलेंगे कोई, अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2024 के बीच में, तो उनको 15% का टैक्स रेट देना होगा, 30% नहीं. All right. So for startups, this was to encourage more new businesses. All right. So if you are established in India between October 19 and March 24, then you pay a tax rate of 15% for first 5 years. You don't have to pay 30%. First things first. So I can believe as a classroom you understand that the tax exemption for corporate tax was not a blanket corporate tax exemption. It was given for the purpose of particular activities. What were the main two ideas? One, reform the tax system, make it improved. Two, improve the structure to get better reporting and better investment. So let's check 5 years later, has it resulted in better reporting and better investment or not? Okay, so you understand the story till here, right? Okay, let's check. So 2019-20, our GDP was rupees 220 trillion. रुपीज है, डॉलर नहीं है, तो मत ढूंढना 4 ट्रिलियन यहां पे. ऑलराइट, 2019-20 our GDP was rupees, nominal GDP was rupees 220 trillion, and our corporate tax collection was rupees 5 trillion. This was in 2019-20. 2023-24, we don't have data for 24-25 obviously yet. The year is still going on. So 2023-24, our GDP ended at around 330 trillion rupees, approximately, again slightly less than this, actually 325 trillion rupees. This is where our GDP ended, around 325 trillion rupees. And our corporate tax collection was 9 trillion rupees, a little more than that, 9.5 trillion, but let's say 9 trillion rupees. Think now, my corporate tax collection is rising at the rate of 80% in the last 5 years, while my GDP has increased approximately at 50% in the last 5 years. So my corporate tax collection is rising at a much faster rate compared to my GDP. What does that show? Higher productivity and firms reporting more. जब आपने रेट हाई रखा था, फर्म रिपोर्ट नहीं करते थे, तो टैक्स नहीं आता था. दूसरी बात, एक्टिविटी कम होती थी, लोग डिस्करेज फील करते थे फ्रॉम परफॉर्मिंग, टैक्स कम आता था. हमने टैक्स रेट कम किए, टैक्स ज्यादा आ गया. कुछ लोगों ने इसमें भी एक चमत्कारी चीज ढूंढ रखी है, उसका नाम दिया है टैक्स एक्सपेंडिचर. तो टैक्स एक्सपेंडिचर क्या है? इफ आई वुड हैव केप्ट द हायर टैक्स रेट, बट इफ टैक्स रिपोर्टिंग वुड हैव बीन व्हाट इज हैपनिंग हियर, देन हाउ मच टैक्स आई वुड हैव कलेक्टेड. आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर टैक्स रेट मैंने कम नहीं किया होता, लेकिन फिर भी टैक्स उतना ही रिपोर्ट होता जितना हो रहा है, तो मैंने कितना कलेक्ट किया होता, तो ऑटोमेटिकली वो हायर नंबर आएगा ना. और फिर कहते देखो ये नुकसान हो गया, और उसको अखबार में लिखते भी हैं, गवर्नमेंट इज लूजिंग 1 लाख करोड़ ड्यू टू टैक्स एक्सपेंडिचर. वेल 1 लाख करोड़ इज अ नोशनल आइडिया. People would have never reported this much income if tax rate would have been high. So they're reporting because you reduced the tax rate. We miss that part. You understand that? So I guess you're clear on this part. तो अगर कोई आपसे बोलेंगे taxes have not picked up, that's not true. अब एक दूसरे बात पे चेक करते हैं, whether investments have picked up or not in India in all these years, 5 years again. So if I look at private investment, not total investment private plus government hota hai. I look at only private investment. Private investment in 2019-20 was around 24% of GDP. You know, this was private investment in 2019-20, 24% of GDP. So if we look at 24% of GDP, $220 trillion का 24%.
So say approximately $52 billion, $52 trillion rupees, I'm sorry. So 220 trillion rupees ka 24%, that's say approximately 52 trillion rupees. This was the the private investment part in 2019-20. Private investment in 2023-24 is now 20% of GDP. All right, private investment in 2023-24 is now 20% of GDP. Now 20% of which GDP? 325 trillion rupees. So this is say approximately 65 trillion rupees. So the private investment has gone up by 25% in the last 5 years. You see that? Private investment has gone up by 25% in the last 5 years. Again, some people say, oh, that's not a great number. Of course, it's not a great number. But what else has happened in the last 5 years? A COVID pandemic, high interest rate all over the world discouraging investors, Russia-Ukraine war, Houthi rebels bombing the Red Sea, Israel-Hamas war. Which private investor will think about investing in such a situation? आप उनको जो मर्जी बेनिफिट दीजिए, उसके बाद भी अगर इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 25% बढ़ गया, आई थिंक वी आर डूइंग प्रीटी ओके. वी आर नॉट डूइंग ग्रेट, आई रिपीट, वी आर डूइंग प्रीटी ओके. Because again, you can't seclude everything else happening around you and say, oh, hang on, we gave this. और मजेदार बात यह है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी बोलते हैं तुम क्यों नहीं कर रहे. उसमें और भी बातें ऐड करिए. पिछला साल इंडिया में इलेक्शन का साल था, मतलब ये वाला साल जो आया, इलेक्शन के साल के पहले कौन इन्वेस्ट करने जाता है? सब डरे रहते हैं, पता नहीं कौन आएगा, और जो आएगा फिर पता नहीं वो क्या करेगा. तो ये आपको समझा रहा हूं, that when we say private investment picking up, private investment picked up by 25% in last 5 years. That's an average rate of around 5% per annum. But don't forget that the recession of 2020-21, we have already suffered from that. And then add to that the other externalities like wars, like high interest rate, like uncertainty of elections. Automatically your private elections investments don't pick up so soon, so in spite of tax incentive. Do I believe we are clear on that? तो अगर आपसे कभी इस बात पे चर्चा हो कि कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन से इंडिया को फायदा नहीं हुआ, अब बोलिए देखिए कलेक्शन ऑफ टैक्स तो बहुत बढ़ गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं. कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स उतने नहीं बढ़े हैं, बट उसके लिए भी वी विल हैव टू लुक एट मेनी अदर फैक्टर्स हैपनिंग अराउंड. साथ में कंपेयर करना पड़ेगा दैट ग्लोबली इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा कंपेयर टू इंडिया में कितना बढ़ा. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैव पिक्ड अप एट 1.7% per annum in the last 5 years. Our private investment has picked up at 5% per annum in the last 5 years. Now that's 3 times the global rate. So one has to, I'm just teaching you analysis. कि जब मेरे साथ आपकी क्लासेस खत्म भी हो जाए तो आप जब कुछ पढ़े तो एनालाइज कैसे करना चाहिए. अब पहली क्लास को याद करिए, मैंने आपको कहा था डेटा इज द की. बट आप मेजॉरिटी ऑफ देखेंगे आर्टिकल्स लिखा हुआ विदाउट डेटा और सिलेक्टिव डेटा. सो अगर मुझे अपनी बात आपको सिर्फ प्रूफ करनी होती ना तो मैं आपको बताता नहीं दैट टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट. ऐसी हरकत लोग करते हैं. फिर क्या होता, देन दिस नंबर rather than 24% of GDP would have been 28% of GDP. But this number would have become 32% of GDP. तो मेरी बात और प्रूफ होती, पर उसी को धोखा करना करते हैं. क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को थोड़ी जोड़ना है मुझे, टैक्स बेनिफिट तो प्राइवेट सेक्टर को मिला, तो सिर्फ वो देखना पड़ेगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा. So as a percentage of GDP, private investment has gone down, but GDP itself has gone up, which then means that investments are happening, but of course not as we would have expected, but then there are multiple reasons for it. We're clear on that part? Corporate tax and GST, ये दो बात समझ आ गई आपको, मतलब इनका कैसे impact है. Next, then you write. Government has, this is the fourth point. Fourth point. Government has tried to improve ease of doing business. Government has tried to improve ease of doing business by introducing
Insolvency and Bankruptcy Act. I will teach you this act when I'm teaching you banking. That is where it will come in more handy. It's Insolvency and Bankruptcy Act, comma, removing 39,000 compliances, COMPLIANCES. Well, just to give you a fact, we have removed 39,000 compliances. We still have more than 66,000 compliances in India. Compliances are small rules that the firms have to go by. मैं आपको उसमें हमारे सिस्टम का मजाक समझाता हूं, कैसे हमारा सिस्टम मजाक करता है. So, after the fire in one of the coaching institutes, the court came down very heavily. It said coaching institute should have a perimeter in which you need to keep a fire safety certificate and so on, which is a good idea. They did that. Then the rules they made, they said there should be a 1 meter difference between the wall and the building for getting a fire safety certificate. उसके दो फैसेट्स हैं, आप समझिएगा ध्यान से. पहला फैसेट, जो सरकार ने कानून बनाए, कोर्ट ने, सॉरी, हाई कोर्ट ने, कि ये फुलफिल होना चाहिए फॉर फायर सेफ्टी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में. इंटरेस्टिंगली वो कानून हाई कोर्ट पे भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है. उन्होंने बोला था यहां पब्लिक इकट्ठा होती है तो आपको फायर सेफ्टी का ज्यादा ध्यान रखना है, वो तो हाई कोर्ट में भी होती है, वहां भी फायर सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए. पर ये जो 1 मीटर पेरीमीटर का आइडिया है, ये हाई कोर्ट भी फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कहा कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करना है. ठीक है, ये एक फैसेट हुआ. सेकेंड फैसेट इज, कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करना है मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ी बिल्डिंग्स अब होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली चाहे अनचाहे आप बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मदद कर रहे हैं ये करके. क्योंकि एक छोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो 2 कमरे के किराए के घर से चलता है, वो कैसे जाके अपने मकान मालिक को बोलेगा कि भाई अपना दीवार तोड़ के कुछ और बनाइए. बी सिंह जी ने तो तोड़फोड़ मचा ली इस बिल्डिंग में पूरी, और बोले हाँ भाई इसको फायर सेफ्टी नॉर्म के अंतर्गत बना लिया हमने, सर्टिफिकेट भी ले लिया. दूसरी जो नई बिल्डिंग बनाई उसको भी अलग से तोड़ा फोड़ा, उसको भी ठीक कर लिया. तो बी सिंह जी तो बिग फर्म हो गए कोचिंग सेंटर में, लेकिन जो स्मॉल फर्म है वो तो बंद होंगे फिर अगर ये कानून इंप्लीमेंट हुआ. तो अब नतीजा क्या होगा? आप तो मदद कर रहे हैं बड़े फर्म्स की इस तरह से. रेगुलेशन का रिलेवेंस बता रहा हूं, that when you try putting regulations, too many of them, you end up hurting new entrepreneur, because a new entrepreneur cannot set up a big building meeting all the regulations, and you end up helping the older ones. And I gave you example of coaching institutes because all of us are sitting here. It applies on any business. And we have too many compliances in India. Would you believe it? Why will people give you employment? According to Indian Companies Act, there are 2,600 different ways in which an employer can go to jail. So why will the employer be willing to be an employer? If an employee is coming to work, mind you, meets with an accident, and the employer fails to report it within 6 hours, then the employer is liable to a criminal offense. How will the employer know why the employee didn't come? लोग तो 6 घंटे अपने बेटे की भी खोज खबर नहीं लेते नहीं आने पे घर, अगर बड़ा हो जाता है तो आज नहीं आया, कोई नहीं भी आ जाएगा. लेकिन हमारे कानून ये बना हुआ है, उस कानून का पालन नहीं होता, ये अलग बात है. कानून बना हुआ है कि अगर आपसे कोई एम्प्लॉय आ रहे हैं, बाई चांस उनको कुछ हो गया और आपने रिपोर्ट नहीं किया 6 घंटे में, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है. एम्प्लॉयर बेचारे डरे रहे हैं. एक कंप्लायंस तो थैंकफुली हमने हटा दिया है, थैंकफुली. आप सोचिए क्या अजीब सा कंप्लायंस था. एवरी फर्म, कंपनीज एक्ट के अंदर जो कंपनीज हैं, दे हैड टू रिकॉर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ देयर एम्प्लॉइज every quarter and report it to Ministry of Corporate Affairs. What kind of ridiculous thing is that? हाइट और वेट क्या रिपोर्ट करना हर वीक, हर क्वार्टर में? और वेट तो मैं फिर भी समझूंगा कि चलिए फ्लक्चुएट कर सकता है. हाइट एक एडल्ट की क्या फ्लक्चुएट करेगी? ऐसे थोड़ी वो काम करता करता घिस गया. अभी छोटा हो गया, पहले लंबा था. सो वी हैड दिस अमेजिंग लॉज इन इंडिया. अब आप कहेंगे सर कोई बात नहीं, कानून बना दिए. अब देखिए इसका खतरा क्या है. These laws are hardly implemented. Many of us don't even know that these laws exist. But if I am an industrial inspector, I can suddenly come to your industry, I can check upon these, and very often you will be found violating these laws, and I am liable to take a lot of bribe from you after that. These compliances create that benefit for the corrupt inspector.
क्योंकि ये अजीब अजीब कंप्लायंसेस ही है। अब सोचिए हमारे देश में बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, क्योंकि गांव में तो मैं ऑफन देखता हूं कि अगर आप शूज पहने बिना बाइक चला रहे हैं तो आपके ऊपर 1,000 रुपए का चालान हो सकता है। मेनी पीपल डोंट इवन नो दैट आई गॉट टू बी वेयरिंग शूज वाइल राइडिंग अ बाइक। ये ब्रिटिश एरा के लॉज हैं, बना दिया किसी ने, चला गए, हम भी चला रहे हैं उसी को। और अब गांव जाइए कितने लोग तो चप्पल भी नहीं पहने होते, बाइक पे लगे हुए खट, एक कंबल लपेटा हुआ है सुबह सुबह। So understand that there are so many laws for which we can be penalized, while those laws are so outdated and many of us don't even know that those laws exist. Sanjeev Sanyal ji had given a very interesting anecdote on that. He's an economic advisory committee to Prime Minister. He said that till 2021, Google Maps were illegal in India, at least on paper, but everybody was using it. So he said one day I called the authorities, I mean the officers from Topographical Map Department of India, and I said I have to discuss few things about mapping, so I want to see you for a dinner and I'm sending you the Google link. You please meet me using this Google map. All of them came and they were all from Topographical Department, Mapping Department, सब लोग आ गए मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है डिनर का प्लेस ढूंढने के लिए? बोले नहीं नहीं, हमें गूगल आपने भेज ही दिया था, पहुंच गए। तो उन्होंने बोला देन आई टोल्ड देम दैट ऑल ऑफ यू जस्ट ब्रोक अ लॉ इन इंडियन कोड while using this map. Why? Because Britishers had made a law way back in 1880s that the only person who will have control on real-time map development and map use in India will be the government. सरकार के अलावा किसी को परमिशन नहीं दो। ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के किया, तो आजानी बात थी। जब मैप के आपके पास हैं सिर्फ, तो आप ही को टोपोग्राफी पता है, तो वॉर्स में या डिस्टर्बेंसेस में you have the upper edge because you are the only one who knows the terrain. You understand that? तो ब्रिटिशर्स ने इस काम से किया था। हम भूल ही गए कि इसको हटाना भी है। तो आजादी के बाद एक 70 साल और बीत गए, चला जा रहा है ये कानून। सरकार के ऑफिसर गूगल मैप यूज कर रहे हैं, पता ही नहीं गूगल मैप करना है नहीं करना। नतीजा क्या हुआ? 2021 में जाके किसी को नजर आई बात, 2021 के दिसंबर में जाके तब ये कानून बना that maps are available for all and anybody can use satellite data imagery to use Indian maps as long as it doesn't violate the accepted position of political boundaries of India. You understand that? So we are that ridiculous as a system that we have rules in our country that even government doesn't know there is a rule. जिनको इंप्लीमेंट करना है, ये टोपोग्राफिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है? उन्हीं को इंप्लीमेंट करना है इस कानून को, उनको खुद को नहीं पता ये इंप्लीमेंट करना है। ये आपको समझा रहा हूं दैट व्हेन दैट हैपेंस, दैट इज लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज़ देन आई डोंट नो व्हिच सिस्टम आई एम ऑपरेटिंग इन, हाउ डू आई रन माय बिजनेस, व्हाट डू आई ऑपरेट विद, एंड यू मेक इट वेरी easy for people to then come and take bribes, do wrong things and so on. All right, in the same thing you write, same point, and it removed don't write removed, you write it decriminalized. It decriminalized more than 1400 clauses. It decriminalized more than 1400 clauses in Companies Act. Okay, what does that mean? Offenses which were earlier treated as criminal offense were converted into civil offense. So it will still be an offense, but you don't have to go to jail. You can pay a fine and you can get away with it. You understand that? So these are called process reforms. ये structural reform नहीं है, ये कोई structure नहीं बदला हमने, structure वही है, उसमें जो processes हैं उनको थोड़ा simplify किया, that make it easier to do business in the country so that people can. But still remember, there are more than 4,400 clauses in Companies Act which are criminal clauses. So you can still have that criminal offense rule on you. तो अब मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूं, मुझसे हो सकता है कोई गलती हो जाए, गलती से, और आप मुझे जेल में बंद कर दें उसके लिए, I'll find it very difficult to then initiate a business. तो ये हमारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं हमारे देश की, जिनके हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं कर रहे होते. We don't even discuss them, but look, improve upon them to promote entrepreneurship in the country. You know, because when you start doing a thing, only then you realize how many nitty-gritties are needed. You know, आज भी, this is a criticism I'm giving you, even today,
19 परमिशंस आर नीडेड इन इंडिया, 19, और मोदी जी बोले थे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, आने के बाद 5 परमिशन बढ़ा दिए, पहले 14 था अब 19 हो गया है. सो 19 परमिशंस नीडेड इन इंडिया टू गेट परमिशन टू स्टार्ट अ बिजनेस इन दिस कंट्री. बिजनेस की शुरुआत करने के लिए 19 परमिशंस चाहिए. That itself becomes a delaying process, so this is the challenge we are having at the moment with respect to lack of ease of doing business in the system we exist in. Then you write next, fifth point, government has taken several steps. Government has taken several steps to promote MSME, like changing its definition, I will teach you these things in detail. I will teach you MSME separately for 1 hour. That will come in the last classes on, but 1 hour I give separately to MSME. Right now I'm just making you write these things. So like changing its definition. Changing its definition means if earlier you were qualifying an enterprise as a micro enterprise for up to 10 lakh rupees investment, now the government has made it 1 crore. So that more enterprises can be under micro enterprise. You get the example? So changing the definition, comma, easier provision of credit, comma, comma, better access to the market, and better testing facilities. Make it better testing and grading facilities. Better testing and grading facilities. So, these are some challenges of MSME, but you just let it be for the time being. When I'll teach you MSME, I'll go back into it. MSME के challenges क्या होते थे? लोन नहीं मिलता आसानी से, ग्रेडिंग नहीं मिल पाती, ISI मार्क वगैरह नहीं मिल पाते, अपने लैब टेस्टिंग नहीं हो पाती प्रोडक्ट्स की, लार्जर मार्केट स्पेस नहीं कैप्चर कर पाते. सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प देम दैट दे कैन कैप्चर अ लार्जर मार्केट, दे गेट ग्रेडिंग फैसिलिटीज, दे गेट क्रेडिट फैसिलिटीज एंड सो ऑन. ऑलराइट, सो पर्पस इज टू अपग्रेड द लेवल्स ऑफ MSME. Another one, then you write, sixth, government has passed labor law reforms, and that is the challenge. They passed the labor law reforms in 2019 and 20. It's been 4 years now. They have not implemented it. You understand that? It's like मैं तुम्हें बोलूं मैंने तुम्हारे लिए set of answers prepare कर लिए हैं और तुम्हें लिख कर दूंगा वो answers, और फिर तुम IAS बन जाओ तब तक तुम्हें लिख के ना दूं. So प्रिपेयर करके मेरे पास रखने का क्या फायदा? So similarly, कानून पास करने से फायदा नहीं है, कानून इंप्लीमेंट होना चाहिए. We have not yet implemented it. That's a challenge. क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर पाए? क्योंकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अग्री नहीं कर रहे. Again, there are 4 labor codes, and I will teach you those things in detail. But out of these 4 labor codes, most of the state governments have agreed. Sometimes there is a couple of states here, one state there, which is not agreeing. One would always suggest that rather than delaying it, that every state agrees, if we can implement it over, say, 26 states which have agreed, 25 states which have agreed, the benefits can be understood, and those who have not agreed will gradually come on the path. But if we don't implement them, saying that, oh, one has not agreed, till then we will not implement, then you're letting one hold the other 27 at ransom. You understand that? So this has been an error we have been conducting. I don't know why, but this has been going on, and that is also a challenge, that we have not implemented the labor law reforms, even though we have passed them long back. But जब आप benefit लिखेंगे exam में तो एक लिख सकते हैं, the government has passed labor law reforms to improve labor market in India.
to improve labor market in India. Then you write, next point, government has increased, this is the seventh point, government has increased import duty, government has increased import duty on several commodities, on several commodities to assure that they are produced in India, to assure that they are produced in India. You know, the commodities like laptop, commodities like LED screens, commodities like solar panel. In all these commodities, the government is increasing the import duty. But again, remember, we will write them as a part of challenge 2. It's a double-edged thing. Why double-edged? If I increase import duty on LED screen, I make it easier for the LED screen manufacturer in India to produce it, less competition from importers. But then the users of LED screen, like a mobile phone manufacturer or a television manufacturer or an automobile manufacturer, they will start getting it costlier. And that can hurt these industries then. So I should be doing my calculations that which import duty am I raising and which am I reducing. Ideally, if you ask me what should India do, reduce the import duty on majority of the products, make them in the sub 5% category. Our average import duty today is 18%, 18. Now, if we can reduce this import duty to something like 8 or 9%, then we can attract much more investment, because globally today is the day of supply chain globally. So everybody would like easy एंट्री इजी एग्जिट फॉर द कमोडिटीज. तो जितने आसानी से आप वो अपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर पाएंगे इंडिया में, उतना ज्यादा वो इंडिया को चूज करेंगे टू मैन्युफैक्चर. लेकिन अगर हम बहुत हाई इंपोर्ट ड्यूटी रखेंगे इंडिया के अंदर, तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट में दिक्कत आएगी, एंड देन दे विल नॉट बी चूजिंग इंडिया एज अ पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. You understand that? So this is something where ideally, if you ask me, our import duty average had reached 13%, 13 in 2014. Since then, we started increasing it. In the current government's regime, it has gone up from 13% to 18%. So we're trying to protect industries in India and trying to manufacture. But what one we have to realize is that that protectionism doesn't promote industry. आप कहेंगे सर लेकिन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना तो जरूरी है. बिल्कुल जरूरी है. तो कैसे करें? करेंसी को डिप्रिशिएट होने दीजिए, सारी इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो जाएंगी. इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का पर्पस क्या होता है? इंपोर्ट महंगा हो जाए. इफ यू पुट एन इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट विल बिकम कॉस्टलियर and therefore domestic products will be chosen. Let the currency depreciate, imports will become costlier. You understand that? And that will protect your imports. What else will be the advantage of currency depreciation? Exports become cheaper. So you can export better and make imports costlier, and so on. Some people then say, oh, but it will make fossil fuel costlier. India is an import dependent country. इसकी चर्चा कल करूंगा आपके साथ कि इंडिया कितनी import dependent है. बट मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, कल भी बताऊंगा ये बात, बट आज के लिए आप सोचिएगा इस बात पे. इन 1991 इंडियाज करेंसी वाज 12 rupees a dollar. 12 rupees a dollar. Today we are at 83 rupees a dollar. So the currency has depreciated 7 times. I will give you all these figures tomorrow written, don't worry. But I'm putting a food for thought in your mind. Between 1991 and 2024, my exports have increased, goods and services both, from $6 billion in 1991 to $778 billion by 2024. So my exports have increased by 130 times. My imports have increased from $12 billion in 1991 to $854 billion in 2024. So in 1991, my exports could pay 50% of my imports. Today, my exports can pay 90% of my imports. With currency depreciation, don't forget. In 1991, my total foreign exchange reserves was $1 billion. Today, my foreign exchange reserves are approximately $700 billion. You see that? In 1991, my GDP was $220 billion. Today, my GDP is $4 trillion. And we are still worried about currency depreciation.
अब भारत में नॉर्मल किसी से कह दीजिए करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, बड़े दुख की बात है, कुछ खराब हो रहा होगा मेरी इकोनॉमी में। क्या खराब हो रहा है पता नहीं, कुछ हो रहा है। मैं आपको सारे डेटा दे रहा हूं जो सारे पॉजिटिव हैं करेंसी डिप्रिसिएशन के साथ, लेकिन हम फिर भी परेशान रहते हैं। इसी को कहते हैं इंजेक्टेड विथ अ थॉट, कि ऐसा इंजेक्शन दे दिया उस थॉट का। मैं अभी बोल भी रहा हूं ना, आप जो लोग बहुत कन्विंस्ड लोग हैं उस बात को लेकर, अभी भी सोचते कुछ तो बात होगी, लेकिन कुछ तो बात है ही। फाइनली एक्सचेंज रेट्स क्या दिखाते हैं? वैल्यू ऑफ वन करेंसी कंपेयर्ड टू अनदर। तो अगर मेरा इन्फ्लेशन आपके कंट्री के इन्फ्लेशन से हायर है तो मेरे करेंसी को डिप्रिशिएट होना चाहिए, नॉर्मल। अगर आपकी कंट्री ज्यादा स्टेबल है मेरे कंट्री से तो इन्वेस्टर्स आपकी कंट्री को चूज करेंगे, तो मेरी करेंसी को डिप्रिशिएट होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, that if my inflation is higher than yours, my currency will depreciate against yours. So if I am India with an average inflation of 4.5% in the last 30 years, and you are USA with an average inflation of 1.7% in the last 30 years, then automatically my currency will start dropping in comparison to yours. Plus, if you are USA, a stable economy whose currency everybody wants to hold, then your demand for currency will be higher compared to mine. Again, people won't hold my currency. If you are USA, which has 71% of its total reserves in terms of dollar, understand that, and I am India, not in terms of dollar, sorry, in terms of gold, and I am India whose 8% is in terms of gold, then again you will be trusted more than me in terms of currency. तो इसमें इतना रोने की क्या बात है कि अमेरिका के कंपैरिजन में मेरी करेंसी डिप्रिशिएट क्यों हो रही है? वो हमसे बेहतर इकोनॉमी है। अगर हम चाहते हैं हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो तो हम उनसे बेहतर होकर दिखाएं। But by chance if somebody says in India that let's work 12 hours a day, Indian Express becomes so upset they write 7 articles in 10 days. Why we should not work 12 hours a day? You know? And you know, my wife was rubbing it in because my work schedule is around 14-15 hours in a day. So whenever an article would come in Indian Express, how it is bad for psychology, how it is bad for your health, she would just send me the link. See, you know, you are suffering because of this. So you know, the point is, but then I have been working like this for last 27 years in my life. And I am expecting that I am mentally and physically sound enough. Maybe barring some things like this, अभी थोड़ा बैक इशू आ गए, किसी के साथ भी आ जाते हैं, काम नहीं भी कर रहा होता तो भी आ जाते, तब ज्यादा तकलीफ होती, इलाज के पैसे भी नहीं होते। तो आप समझिए, काम करने से अवर्जन जिस देश को होगा, जो कैलेंडर में पहले यह देखेगा कि छुट्टी किस किस दिन है। I mean, this can't be. You can't grow then. तो फिर तो अमेरिका ज्यादा डेवलप्ड रहेंगे ही, क्योंकि वो हमसे ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। तो आप समझिएगा ये बात, दैट व्हेन इट कम्स टू करेंसी वैल्यू, ये सब मिथ क्रिएटेड है। करेंसी की वैल्यू गिरी तो हमारा कुछ नुकसान हो गया। करेंसी की वैल्यू ड्रास्टिकली गिर जाए, बहुत जल्दी गिर जाए, तो हमारा नुकसान है, नो डाउट। You understand that if currency value falls drastically, if currency value falls by a very large amount, then maybe we are in trouble because everybody will be destabilized. But otherwise, over a period of time, the currency got to depreciate of the country whose currency is less in demand. There is no big deal about it. So, but in India, we have huge resistance to that depreciation. So we don't let the currency depreciate. Have you done NEER and REER with Reddy sir? तो आपको समझा रहा हूं, तो नीर पे डेप्रिसिएशन हो भी रहा हो, जरूरी नहीं है ना रीर पे होगा, because it's possible my inflation can be higher. Suppose my currency depreciates by 10%, but my inflation is at 20%. Then in real exchange rate terms, my currency appreciates by 10%. No, that is what has happened in India very long. अगर आज भी आप नीर और रीर का इंडेक्स देखेंगे, on नीर my currency is 92. That is depreciated by 8% in the last 1 year. On REER, it is still at 104. We are appreciated by 4%. Ideally, India's currency value should have been 87, 88 rupees to a dollar today. We have still kept it at 83. नहीं गिरने दूंगा। इज्जत का सवाल है। तो आप समझिए, करेंसी है, पजामा नहीं है, ठीक है? आप गिरने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कंट्री को फायदा ही होगा। So unless we don't get that sense, we will keep losing on exports and unnecessary. आप कहेंगे सर import duty में क्या दिक्कत है? Import duty again means that the government starts selecting
and choosing this sector I will protect, that I will not protect, and that can become dangerous because government may not have the wisdom every time to correctly choose the sectors. Depreciation, it's correctly choosing everyone for everybody. दूसरी बात आपको सर एक और बात आपको समझा रहा हूं सर, बट पेट्रोल एंड डीजल विल बिकम कॉस्टलियर. Good, no? Then only people will shift to solar energy. If you keep giving me thermal energy subsidized, I'm not mad, I will go and set up a rooftop harvesting. Why would I do that? If you give me thermal energy, if you give me fossil fuel subsidized, why will I buy an electric vehicle? I am getting my diesel subsidized from you. So if I, and how are you subsidizing it? Again, you have done these topics with Reddy sir, you will understand me. So if I don't want my fuel to become costly, and I don't want the currency to depreciate, then I will have to supply dollar to the market. Everybody clear on that? Does RBI print dollar? No. So where will they supply the dollars from? Their foreign exchange reserves. Now, as I supply dollar and don't let the currency depreciate, my imports will become costlier or they will remain the same price. If I don't let the currency depreciate, will remain the same price? If the imports remain the same price, will people keep demanding them more and more or not? And when people keep demanding them more and more, my import bill will be higher and higher. My import bill higher and higher means more pressure on my currency to depreciate. Again, I will not let it depreciate by supplying what? Foreign exchange reserves. One day I will run out of my foreign exchange reserves. Happy 1991 all over again, no? Enjoy life. So, this is amazing that we even try selling these things in our country. कि हाँ नहीं करेंसी को डिप्रिशिएट मत. कैसे भाई, मेरे बस का ही नहीं है. जिनको तकलीफ है फॉसिल फ्यूल से वो यूज करना कम करेंगे. वो मार्केट को सिग्नल जाना चाहिए कि नहीं भाई पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया. आप आर्टिफिशियली महंगाई कैसे रोक लेंगे? कार की इंजन बेटर बनाइए, फिर लोगों को बोलिए कार कम यूज करें, पॉट होल्स कम कीजिए रोड से ताकि जैम्स कम लगे. ऐसे भी तो फ्यूल बचाया जा सकता है. सस्ता रखने की क्या जरूरत है? सो वंस वी अंडरस्टैंड द टेक्निक्स, we will be a much better economic system compared to what we are today, where we talk ridiculous to protect the existing status quo. And that is what ruins things at times. Okay, then you write one more point. And whatever I tell you in the classroom, these discussions, do think over them at home. जैसे हमने शुरुआत में PLI पे डिस्कशन किया, मैं आपको समझा रहा था सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी, अभी एक्सचेंज रेट पे डिस्कशन किया. आप घर जाके भी सोचेंगे जरूर इसके ऊपर, नहीं तो ये दिमाग से निकल जाएगी बात, फिर मेरा सारा बोला हुआ बकना हो जाएगा. ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ये बोला हुआ यूजफुल रहे, जस्ट थिंक ओवर इट फॉर अ मिनट मोर, दैट ओके सर वाज सेइंग दिस एंड मे बी दिस इज द फैक्टर, दिस इज द फैक्टर. That will help you quite a bit. If by chance possible, write these things at the side and sometimes in the copy, will give you good arguments 1 year later. All right, before the mains exam. Okay, next one, then you write, government has planned to establish national investment manufacturing zone. We will call them NIMZ, National Investment Manufacturing Zone, as integrated industrial townships. Integrated industrial townships. Integrated industrial townships imply townships devoted to an industry. For example, Jamshedpur, it's an integrated industrial township, or Salem, or say Bhilai or Durgapur. These are all integrated industrial townships. So they're townships, but they're mainly devoted to catering to the requirement of the nearby industry. All right, so integrated industrial townships with cluster-based manufacturing. Cluster-based manufacturing. Cluster-based means 10-12 industries together in one place. That is cluster-based industry. Cluster-based manufacturing to be developed
to be developed over a minimum area of 5,000 hectares 5,000 hectares, comma, with 30% of the region, with 30%, 30% of the region devoted to manufacturing. Okay, 20 such NIMZ have been planned in India. 20. ये डिक्लेरेशन हुआ था 2015 में. This is 2024. Out of 20 NIMZ, only 3 have been notified as yet. None of them functional. Only 3 notified. Notification means government has identified the land area which will be taken up to develop NIMZ. So even if we go by Avengers speed, it will take us around 3-4 years to develop our first NIMZ. That is the problem with the current government we are running at the moment. They announce, then they forget. जब announcement होता है, अभी आप देखेंगे 2 महीने पहले भी announce हुआ था, developing jewels of industrialization. So 9 sites will be chosen and they will be developed to create a jewel of industry. Massive announcement होते हैं, फिर 10 साल बीत जाते हैं, कुछ हुआ नहीं होता. That is a massive challenge because remember, planning is not important, implementing is. And we fail to implement in these areas. NIMZ is a typical example. So it has been done, but unless again we don't implement, it doesn't work. You write below that, challenges of industrialization in India. I will just take 6-7 minutes extra of your life. I'm sure you can give me that for it. Right? Challenges of industrialization in India. First point you write, lack of implementation of labor law reforms results in discouraging industrialization. We just discussed, I hope you recall, multiple labor laws, lack of flexibility in labor law, outdated labor laws. These are the challenges of India. We have tried implementing passing the new labor codes, but we have not implemented them. Becomes challenge 1. Second, you write, difficulty in land acquisition. Land acquire करना इंडिया में उतना ही difficult है जैसे निर्वाण प्राप्त करना. It's comparable. Difficulty in land acquisition due to lack of proper land records, especially in the rural areas. You will see land records have become very fuzzy. आप सुनते होंगे कभी कभी एक भाई की जमीन दूसरे भाई ने बेच दी. ऐसे कहानियां आती रहती हैं that one brother sold or one cousin sold the land of other cousin and then they are in the court case. Now that makes it very dangerous for anyone to invest in such a land system, because suppose I am a factory owner, I decide to develop a factory, I buy a big piece of land, and then somebody else comes 6 months later and says actually this was my land and I'm filing a litigation in the court, and the court gives a stay order and now I am gone forever. So that becomes a challenge of land market in India. In the same thing you write, put a comma, rigidity in Land Acquisition Act. The Land Acquisition Act in India has its own very rigid terms and conditions. So many times taking over a land becomes very difficult. Alright, put a comma. Fear of litigation. Remember, there is no fast track court for all this.
और सिविल मामले एक बार कोर्ट में चले गए तो हो सकता है 2-3 जनरेशन के बाद फैसला हो, यू नो, सो देयर इज फियर ऑफ लिटिगेशन एंड corruption in land registration. You know, the registry office will have corruption. There is a lot of corruption where people ask for bribes to register your land in your name. You understand that? That is an added cost that people don't want to incur. तो इसीलिए आप देखेंगे मैक्सिमम जगहों पे इंडस्ट्री चलाने वाले वो लोग हैं जो पॉलिटिशियंस के खास होते हैं. You understand that they have to be well connected with politicians so that land doesn't remain an issue. Again, whom does it help? The already established ones. The new ones find it very difficult. So if I am a Tata or I am a Birla or I am an Ambani or I am a Wadia, I will find it easy to acquire things. But if I am a new startup, well, I will have a lot of challenge starting a manufacturing company in India. Then you write next, third point, lack of availability of formal credit. Formal credit means the one you get from banks or other formal institutions. Formal credit results in high cost of loans. Results in high cost of loans. Think, if the formal system cannot give you credit, then you become dependent on whom? The money lenders. Informal system, and the interest rate suddenly shoots up from 2%, 3%, 7% to 2% per month. You know, that kind of a thing. So that becomes a challenge of doing business, especially manufacturing again, because it's a long-term thing where you have to incur expenditure. Next, you write, lack of ease of doing business. Lack of ease of doing business reflected in multiple permissions for entry. I was just explaining this to you. When I said multiple permissions for entry, 19 permissions needed to enter in India. So multiple permissions for entry, comma, entry का मतलब होता है starting a business. Alright, so multiple permissions for entry, comma, lack of single window clearance. Lack of single window clearance. Single window clearance is getting clearance at one place. So lack of single window clearance, comma, multiple compliances in Companies Act and lack of ease of exit. Lack of ease of exit is if I want to close down my company and go away. Too many laws even for that, even now. Even though Insolvency and Bankruptcy Act has improved things quite a bit, but still there are too many delays we face. Next, then you write, lack of well-developed infrastructure. Lack of well-developed infrastructure keeps logistical cost high. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूं. National highways have developed so well in India, but then if you get into state roads or city roads, you will see the difference. So now when I've established a factory or a storehouse or an industry, I can't take it to the national highway, और जहां नेशनल हाईवे खत्म हो रहा है वहां नीरज चोपड़ा को बुलाए कि अब आप यहां से जैवलिन की तरह थ्रो करके उसे सीधा मेरे फैक्ट्री में लैंड कराइए. ये तो होगा नहीं. So that means lot of trouble in entering the city and then reaching your factory or your industry, and that again increases the logistics. Electricity is again a challenge in India, especially interiors, and that discourages investments from flowing in. Another one you write, rigid rules reflected in
rigid IPR is intellectual property right, rigid IPR and stringent environmental protection rights, STRINGENT, stringent environmental protection rights, which discourage stringent environmental protection rights which discourage investment. Okay, just to make sure you don't misunderstand, I am not at all saying that we should not have an environmental protection right. What we are saying is we have an environmental protection right which is very complex, which then means that those who want to break it, like a sand mafia or an iron ore mafia, mining mafia or a coal mining mafia, they break it impunitively. But those who want to follow the rule and do business with honesty find it very difficult to do that. You understand that? So that is a bad law. That's not a good law. So stringency is a problem there. All right. Then you write one more. Lack of administrative reforms. Lack of administrative reforms and judicial reforms discourages property rights protection. Property right protection means मुझे कोई आकर धमकी ना दे कि आप मुझे पैसा दीजिए नहीं तो आपका फैक्ट्री तोड़ दूंगा. You understand that? That's called extortion money. But extortion is very common in our country in many places and with support of administration sometimes. So we need to make sure administration is well reformed. Judicial reforms mean cases are quickly resolved and so on, so that we make sure again that contract enforcement takes place. If me and you are in a contract, we should trust the system that if one person violates, the system will come to my help. If I don't trust the system, I will not do business in such a system. You understand that? So in the same thing you write, and contract enforcement, which are important for business development. Which are important for business development. Okay, you just give a heading where we will stop today. You write structural reforms required. Structural reforms required to promote industrialization in India. Structural reforms required to promote industrialization in India. Alright, we'll begin with these reforms tomorrow. Just one thing, next 2 days also I will have to come at 8:30 only. So kindly keep the class at that time. 8:30 I'll see you next couple of days. जो मेरे साथ आपकी classes हैं, मेरे साथ वाली classes. Then the next teacher will make it back at 8, but 8:30 for the next 2 days. Thank you all of you. And thank you people online. Tomorrow 8:30 I see you.